ये वेबसाइट पे लिंक शेयर हो गया। ये सारा AutoCAD का जो हमारा सेशन है और Visio का लैब सेशन 3 टू डिस्क्राइब द बेसिक कमांड्स ऑफ दिस, और ये सारा मैंने इधर से लिया है। ये आपका जो मैनुअल शेयर किया हुआ है, ये मैनुअल अभी मैंने दोबारा अपलोड किया है। कुछ चीज़ें जिस तरह जो ना देखें, ये नोट करके मैं कुछ चीज़ें इसमें नहीं काम कर रही थी, जैसा लाइन की कमांड में एक प्रॉब्लम आ रहा था, तो वो मैंने इसमें नोट डाल दिया और इसमें जो उसका सोल्यूशन था वो भी डाल दिया। तो इस तरीके से आपने वो चीज़ें जो ना मैनुअल, ये मैंने अब दोबारा अपडेटेड शेयर कर दिया। इसी तरह ये देखें इधर, ये जो रेड में लिख दिया मैंने, तो वो मैनुअल आप अपडेटेड जो है, जब आप फॉर एग्जांपल आप लैब 3 आप लिखनी है, तो ये लिखने से पहले पुराना मैनुअल ही ना, स्टूडेंट मैनुअल आप जो है वो उसी को देखिएगा। लेटेस्ट जो है ना इधर से डाउनलोड कर लीजिए, उधर से जहाँ से पहले किया था। ये आखिर में होगा इसके, ये देखिए ना आखिर में ये मैनुअल लैब 1 में था ये वाला। अब ये जो वर्ड वाला है, ये मैंने दोबारा अपडेटेड शेयर कर दिया। इस तरह ये होगा कि आप वो जो रेड वाली जो चीज़ मेन थी वो भी इसमें कवर हो जाएगी। इस तरीके से आप इसको, जब भी मैनुअल लिखना है, लैब 4 लिखनी है, तो लैब 4 लिखने से पहले उधर से दोबारा डाउनलोड करें, उसमें जो चेंजिंग होगी वो मैं अपलोड करूँ। अच्छा, अभी हम देखते हैं, अभी आप साथ साथ जो है ना कुछ खुद भी कंट्रीब्यूशन कीजिएगा, फिर वो जो आपके एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं वो भी साथ साथ लिखते जाएंगे। जो जो कोई मैं ड्रा करता हूँ उसमें आप एडिशनल चीज़ आपको पता है तो वो आप मुझे बता दें, हम वो भी साथ कर लेंगे। तो इट्स जस्ट म्यूचुअल लर्निंग इन्वायरमेंट, not the one way mode of communication. So foreigner also available, I think so, in this session. Any foreigner attending this session or not? I think so. C section has one foreigner. If he is attending, then we will speak in English, because you have one foreigner. So let's start in English. I think so. Maybe he will join later, so he will face problem. So lab session 3, AutoCAD session, and you can see, and then there is the some notes which I have made for Visio and AutoCAD. So these notes also uploaded here. You can see here, it are also uploaded here, so you can download from this. These are the just hints you will do by yourself, and just prepare the manual by yourself. Videos last 2 sessions also uploaded here. Your session today's session will also be uploaded today 6 p.m. here, similarly, and so on. For example, lab session 2, all 4 sessions, your session was third one and uploaded, so you can see like that. And now let's this is our environment, AutoCAD environment, and for example, we want to describe different types of lines: rectangle, arc, circle, spline, ellipse, hatch. These are the different commands which we will try. Last time we also done some of these commands already done, but today again thoroughly one by one we will do. And so to sketch the drawings in accordance with the 2 basic commands, then you will draw some sketching, and in the end there will be a task. Similarly, then some Visio tasks will be available. So in the end you will show me the task. I will assign you the task. Now let's start. Basic command 1, line. So here you can see that this is the line command. So last time we already used line command. So from here, or you can write here the line command. You can write here, or you can from the draw you can click here line. So specify the first point. When you will specify first point, for example 10, 10, 10, 10, for example. And you can see when you will write the second point, for example 20, 10, 20, 10. You will see last time we were facing problem that 20 is written here. You can see this is written here, not in the command window. This problem I have tackled today, and the problem was actually you have to switch off D by N in AutoCAD 2006, or if you have the latest version of the AutoCAD, then you will press F12 to just change the mode of this. Now I will show you. For example, here I will press F12 from the keyboard, F12, only F12. Now you can say I press F12, you will see that option is disappeared. Now again I will press F12, the option is there again is there. You can see here angle and one length, and then there is an angle. Again F12, when I will press, you will see that again disappeared. Disappeared mean now whatever you will write, it will be written in the command window. For example 20, 10, you can see here it is directly written in the command window. Now I will show the last problem which were you facing. Line command again.
and this delete. I will delete, Control A, delete, line command, and then specific first point. Now I will press F12. For example, first point 10,10. Enter is okay, but F12. If F12, you will press this point will appear. Now if you will write 20,10, 20,10, you will see you wrote 20 length and 10 angle. You wrote like this, but this is not good. You wrote 20 length and the angle is that was 10. So it will be written like this one. So this is wrong. Actually, we want to draw this horizontal line. So this is wrong. So Control A, delete. Again, line command. Here you can see 10,10. This is not written. So this means you have to press F12 again. F12, escape, F12, and then again you press the command, and then 10,10 is okay, and then you will write for example 20,10. So it will be written in the command window. Okay, you got the point, because this is F12. In latest version you will press F12. This was the issue we were facing, U section, C section and D section also. So this is the remedy of that problem. Now it is okay. Now let's say this is line we have drawn. And if you have the AutoCAD version 2006, then you will just press F12 also, okay. But if you will just dyn, if you will deactivate this dyn, so I have pasted this one in the old menu. This data is not available, so I have written new in this one, which I have selected here. Okay, so you have to be careful to download the latest lab manual from the website. Okay, so next is the construction line. Any input from your side? If you want to add something about line, you can add. Similarly, construction line, I will do so one by one. Still, if you find that something I am missing, so you can add that, and I will add your extra points like that. So this will be the mutual activity session. Okay. So again, let's C section. Construction line. So construction line, you can write the command in the command window X line, or construction line. You can say draw from here. This is the construction line. You can write X line here and press enter. So there is the construction line. So you can do the construction line. For example, just specify the first point. It says specify the point. For example, I will specify this point. Now this point, specify the through point through which it will pass. For example, here I will select that it should pass from here, so it will pass here, and then it should pass here. It is, for example, you can see in both directions. If you want to draw different objects on the same line, so this construction line will be helpful. It is going to infinity, so you can see if you will like this, it is going to infinity. Okay, so in this way you can draw the construction line, and it will help you to align all the drawings, and there is no error in the drawings. Construct, Control A, delete, Control escape, Control A, delete. Again, let's start. The next one is, for example, a construction line, and then there is another line. For example, you can see here construction line, and then ray. This ray is only one direction. For example, ray, specify the start point. For example, this is start point, and it will pass through this one, this one, this one. So you can see this is one way, and construction line wise was in both directions. Control A, delete. Now again, next for polyline. Polyline, you can also, here is the polyline in the draw. For example, you can this is the polyline here, polyline, or you can write the P line here. Okay, so in this way, P line, for example, enter,
This is the polygon. Specify the start point. So you can start. You can also enter the coordinates here, 10, 10 like that. Okay. But this time, because in the last two sessions I have entering the points by entering the command and entering the coordinates, XY coordinates in the command window. Today I will just use the mouse. Okay. So this is the something new. So for example, specify start point. I will specify this one, start point. Now it will specify the next point. It says next point. For example, I will specify this is the next point. Okay. So this is now it will say specify next point. For example, next point, this one, this one, this one, this one, close. Okay, and enter or escape, both is okay. Now you will say what's the difference of this polyline and line. I will now draw with the help of line, any object with the help of line, and you can say what's the difference, escape or enter. So you can say when you will click this, you will see these are the different lines. It shows that the lines are different. But here, if you will click in this polyline, you will see all the lines showing that it is a unity, one polyline. This is actually the one polyline, not the segments. These are actually the segments 1, 2, 3, 4, 5. But these are the combination of 5 is actually the polyline, and it will only the one polyline, you can say. So here you can see the lines are individual. If you will delete, for example, this line, it will be deleted. But if you will delete this line, for example, you select one line here and delete, all whole polyline will be deleted. Control Z. So in this way, you will see the difference in polyline and simple line. Again, polygon. Polygon. Okay, so polygon circumscribed or inscribed. Okay, so let's Control A, delete polygon. Okay, before drawing the polygon, let me draw the circle first. Okay, for example, I will draw the circle, specify the center point. Randomly, I will specify center point, and the specify the radius. And radius, I will specify. For example, I will specify the radius 6. For example, 6. Okay, this is the 6 radius. The radius of this circle is 6. If I want to find the radius, for example, from here to here, you will see it is 6. Okay, so it is 6. Delete. Now this circle has radius 6. Just remember that it has the radius of 6. Now draw polygon. This is polygon. Just click on this polygon, or you can see here that for polygon you can write polygon, simple polygon. You can write POLY, polygon. Enter, specify the number of sides. So polygon, for example, I want to draw the polygon of pentagon, for example, 5 sides. So it will be 5. Okay. Now it says specify the center of polygon or edge. So I will specify the center of polygon. Center of polygon, I will specify the center of this circle will be the center of polygon. Okay. I specified this one. Okay. Now again, it says the polygon, enter the option. Yes, inscribed in circle or circumscribed or circle. Inscribed mean the polygon will be drawn inside the circle. Circumscribed mean the polygon circle will be inside the polygon, or polygon will be outside the circle. So I will say first inscribed in circles. Inscribed, and then I will specify the radius. Radius will be same, 6. I will specify 6 just to show you the difference. 6 radius is 6, like the radius of the circle. Okay, I will enter. You will see the polygon of radius 6 is inscribed in the circle. So this polygon is inscribed in the circle, and its radius is same because the circle radius. It means the radius of the polygon will be the distance from center to this corner, not edge, to this corner. Distance from here to this point will be from here aligned. I mean, maybe aligned from here to. So it is 6. Okay, so 6 is actually the distance from here to here, not. So this is okay. Now I will again, for example, I will draw polygon again. Draw polygon again. Polygon. Enter the sides. Sides are 5.
Okay, it's again already 5, so I don't need to enter 5, write 5, just press enter. It's by default 5. Now specify the center point. Center point again I will specify, just I will delete this dimension because it will create the problem. So draw and then again polygon, specify 5 sides is okay, enter, and then I will specify the center point, and center point is this one, and then inscribed, no, I will use this circumscribed of circle. So I can also write, for inscribed, I can write I already written. If I will press enter, by default is inscribed in circle. Okay. Circumscribed of circle mean C. If you will write C here and press enter is okay. Otherwise click here also okay. I will write C for example and then enter. Circumscribed. Now it will specify the radius of circle. Radius again 6. I will press and you will see now this polygon. You can see this polygon. So this polygon is now very big. So this polygon is circumscribed of the circle. So you can see now the distance of this polygon is actually the distance from center to this midpoint. This is actually 6. Okay, so you can see here. And for the inscribed polygon, you can say for inscribed polygon, actually the distance 6 is not exact. I will click here. End point, but I want center of the circle. Okay. This dimension is creating problem and I don't want to delete this dimension, just to show you the difference between the node. Okay, I think so this one. No. So I have to delete this one. Dimension, center point. This one. I will place it outside, okay? Just here, for example. And then dimension, center, and this center point, okay? This I will place here. So you can see here that this is the distance from this point to for inscribed circle. For inscribed circle, this is the red. Okay. For circumscribed like this one, circumscribed circle, you can see here that this red line from center to the, you can say to the edge, the distance between center and edge of the one edge or one side of the polygon, that is actually the 6. So here you can see this distance inscribed is it is the corner point of the you can say edges or sides, corner of the two sides between center and corner of the two sides. This is the distance actually. So you can say you have already feel the difference. What's the difference actually? I want to show you. Polygon and then there is a rectangle. Rectangle again, Control A, delete. Rectangle just you can write rectangle. For example, rectangle, only rectangle you can write rectangle. Like rectangle or rectangle, full rectangle you can write rectangle, or you can click here for rectangle and for here you can write rectangle from here. Okay, so now you can see here that it shows that specify the first point. So I will specify first random point like this one. This is first point. Now it shows this specify other point. So other point, for example, I will write here this one. You can also write these points by
showing the coordinates here. So if I want to see which coordinates are these one, so I will just write dim, and dim specify first action line. For example, this one first point, and this one is second point. For example, second extension line. Okay, this one. Specify dimension line location or single line for angle. For DIM, this is also the dimension. You can write from here or just DIM. You can write. It's okay. No need of this. Okay, rectangle. Okay, and then actually I want to show you another thing. That was a dist. Yeah, dist distance. Distance. Specify first point. This is the first point. Specify second point. For example, I want to specify the distance from here. This one. So you will see it will show the distance here. 19.89 is the length, and angle in XY plane is 0. Angle from XY is 0. Delta X 19, delta Y 0, delta Z 0. Okay, so 19 delta X actually X axis, this length is 19 point something. So in this way you can find dist. For example, dist, enter, specify first point from here to here. For example, you want to there. You can say the distance is 21.29. So this hypotenuse you can directly find 21.27. Okay, and the angle in XY plane is, you can say this one 20 degree, this 21 degree from here, and then you can see 19 point x-axis. X-axis length of x-axis is 19. Why is this? For example, I will do the dimension from here to here. This one dimension, then this dimension, then I will draw the line from here to here. Now you can see like this, and the dimension of this line, now dist, and also angle. For example, I will find the angular distance. Click here and click here. This is 21 degree. Okay, this is 21 degree. So now I will just use the dist command. These things you can directly find. Dist, for example, dist, enter, specify first point. So this is the first point, for example, because rectangle, its points same, opposite find. This first point and this is second point. Okay, first. So you can see, okay, just confusion. You will be confused. For example, distance, specify first point, this one, specify second point, this one. So you can see this 21.27. This is the distance of hypotenuse, and then there is a 21 angle. This is 21 angle, and you can say x is 19.84. 19.84. This is the x. Delta y dy 7.65. This is 7.6. So in this way you can find that all things are directly with the command of distance actually. So now again, this is rectangle, and then there is a arc. And for arc, you can say here there are different points, 3-point arc, and these are all the arcs. So I will draw one by one. For example, I will not specify coordinates with the help of in command window. I will not write XY coordinates in command window. It will take time. So we'll quickly go through all these. For example, 3-point. For 3-point, you can say specify arc. Also, you can write arc, ARC, arc. In the command window, if you will write only A, it will show arc here. But in 2006 version, maybe you have to write full arc. Okay, otherwise it shows the highlighted point is a arc, so it means is okay, arc. Specify start point of arc. First I will, for example, here's the arc. All these points I will just crop so that one by one you can see. Snipping tool, and snipping, and then delay. Okay, now these are the arc points. I will copy it in the notes. For example, here.
These are the different arcs. Okay. These are the arcs. So first 3-point arc we are using. Okay. 3 points arc. So 3-point arc. 3-point arc. This is the 3-point arc. I will specify the start point. Start point. I will specify this one is the start point, for example, and then it shows that specify the second point. So for example, second point is I will draw some line, for example, here. This is the line. This is also line like that, so that we can now arc. I will draw the arc from here. 3-point. Specify start point. For example, this is start point. Then specify the second point. Second point I will write this one. Okay. Now specify end point. It shows center point and end point. So end point, for example, I will say this is the end point. This is the end point. This you can say which end point is this one. You will see. If you will write this one, no, nothing happened. So for example, end point is this one. So arc will be drawn like this one. Okay. So now arc, for example, I will say start, center and end. Now I want to use this point, start, center and arc, and start, center and end. 3 points, actually 3-point mean start, and then second point, and then end point. This is actually 3-point mean this one. But you can say start, center and end. This is the other one. So I will click again, start, second point. Then I will write, if I will write here, it will be flat. So I will write flags, for example, third point anywhere, for example, this one, this one, this one, you see, this one, if will this point, it will pass all these 3 points. The arc will be passing through these 3 points. So your third point will be a valid point. Otherwise, for example, I will click here, it is an invalid point. So for example, I will click like this one, this one. If I will click here, it will be opposite like that. I will click like this. So this is there. Now I will write start, center and end. Start, center and end. Okay. So start, center and end mean I will delete this one and this one, for example. Now start, center and end. And for this also you will just write R command here. You can see this is the R command. So ARC, again you will write R command actually. And then how you will use this command, start, center and end. Start, center and end. By using this arc, all these commands will be used. The basic command is arc, you will write in the command window, or you will click just like that, 3-point, and then you will how to change start, center and end. Now I will use start, center and end. 3-point was one, start, mid and end, but here start, center and end. Okay. So start and center. So for specify start point. Okay. For specify start point, no, not center, specify start point, because I'm using start, center and end, this one. So I will use start point. It is already start point. Specify start point first. First option is specify start point is okay. So I will start specify first point. This is start point. Now it will say specify second point. But I will not use second point because second point in the 3-point option, that was the second point. But here I want to use the center point. Center point mean I will click here, this in the center, this center. Center means I'm executing start, center and end command. Okay. So I will click just like in center I will write C. Okay. C or enter or center. So center. Now I will click the center point. Now again specify the end point. So because I am executing this command start, center and end, so it means end is okay. So I will use end point. It already showing that by default is specify end point. So I will specify the end point. For example, I will specify this is my end point. So it will be drawn like that. So with the help of R command or ARC R command, I have drawn start, center and option of the or command of the arc. Now I will start, center and angle. Start, center and angle with the help of same arc command. Okay. How? Let's start. Delete arc A or C or simple A. Now I will specify the center point because you can see here start, center and angle.
Start center. Start is the okay. This is the start point is okay. Start and then center point, not second point. Center. So center I will use. I will click center, and this is the center point. And then it shows the specify the end point. No, I will not use end point because I want to use the angle here. Angle. So angle mean I will here use the angle. This is the actually angle. I will click the angle. Okay. So when I will click the angle, it will show that that which angle you want. Okay. So for example, because my line from left to right, so you can say like that. For example, I will write angle 90 degree. So you see, this is the 90 degree. So for example, I will again arc starting point. I will start from here. Starting point, then center point. So this is the center point. Then I will say angle. So angle 90 degree. No, we did not. I think so. Select arc A. Okay, you will show me whether I'm doing okay or not. Start, center, and angle. Okay, you can highlight. Start. This is the start point. Then center point. Center. I will click center and I will specify center point. And then I will click angle. Yes, yes. I didn't enter angle. Angle. Then I will press. Then I will press 90, for example. So you see, from starting from here, it will draw like this. And from here, if you want to draw in this point, for this starting point will be this one. And here starting point is this one. So you can see the difference. So again I will draw for start center angle, then start center length. Start center length. Just remember start center length. Again with the help of arc command. So arc A. Start center length. Start is by default is okay. Start. This is start. Center I will click center and then I will specify center, and then there is length. It shows the length actually the chord length. Okay, so this is the chord length. So I will click chord length and then I will see, for example, I want to show the specify the length of chord. For example, length of chord I specify that it is 5, for example. So you see, this is the length actually is from here to here. This is the point from here to here. For example, this is the point from here to here. We didn't specify the exact point. So yeah, this is okay. I think so. This is 5. Okay. Oh, sorry. No, you will not press escape. This square box mean endpoint and then this one. So you will just place anywhere first, left click, and then it will be placed. So 5 is actually the direct distance of the, not the distance of this one. Last time in last lecture we were trying that this is the length actually. We were trying this one. And we are seeing that the distance is 6.25, but we have defined 5 distance, but it is showing 6.2526. So this is actually the length of this one, but the chord length is not this one. This is actually the direct distance from 2 points of the arc. So in this way, you can start, center, and chord length. In this way, you can draw the arc. And now, again, we will just, for example, the next one is start, center, length, start, center, start, and angle. Yes, start and angle. Start and angle. Okay, remember it. Start, and or angle. I will just, for example, if I will like this. Yes, is okay, I think. But no, this is maybe you are not feel easy, but no problem. I think so. We are using our command and directly we write, no problem. So, okay. No, it's visible to you. I think so. No, it's easy. So start and angle. Okay. So R command again. Start. Start point is by default. It shows specify start point of the arc. So I will specify start point. Then it shows specify the second point of arc. So I will show end point. I need end, not second point. So end, I will click end, or I will click right E and press enter, or just click end. Okay. So this is the end point for example. Now I need angle here, angle. So you can see
I need angle, not radius, not direction, only angle. So I will click angle and then I will specify the angle. Okay. So for example, I will specify angle. So again 90 degree, for example, I will write. So you can see start point, end point, and 90 degree. It will draw the angle. For example, I will start and if I will draw, for example, arc, start and an angle, start this one and an angle, for example, 45. So 45 is like this one. So you can feel the difference. What's the actually the difference between the angles? Again, arc, start point, end point, arc here, and this one, then angle. For example, 180 degree. This is 180 degree, okay? And if I will draw the arc, start point, end point, then angle 90 degree. This is actually the 90 degree. Why I don't know why 90 degree. Anyone can show that why it shows 90 degree this one and 180 degree also this one. 180 degree is the bigger one size and this one is smaller size. And for example, I will 360 degree, for example, 45 degree. Yeah, 45 degree. Yes, arc. So start point, this one, then end point here, and then angle. Angle I will try it 45 degree. So this is 45. You can see that actually the angle is actually, no, you got the point. Maybe the angle is 45. Anyone can show me, tell me that why this angle is 45 and then is 90. From where, which point it is? You can say it is a measuring. Can anyone tell me? This is 40 and then again I will draw, for example, arc. This one and then end point. End point is this one. And then angle. Angle, this is 180, for example. This is 180. Anyone can tell me what's why this is 180 and this is 90 and then 40. Anyone? Because I don't remember what's the difference right now. Start point, for example, I will write another angle so that we can maybe differentiate what's actually the difference. Otherwise, when we'll use this command, we will know better. This point, then end point, for example, this one. And then there is an angle 180 and 360, for example. Oh, 360 is out of command. It is not showing. And then 45 and 30, 45, 90 and 180. Now I will tell you this in later lecture. Maybe I will try to find the answer why it shows that this is 45. This is 90 degree. And this is 180 degree. Okay. Okay. Let me find it later on. Okay. So this is actually what I want to show you, that this start and an angle, it will draw like this one. Control A, okay, delete. Now start and direction. This is start and direction. For example, again arc. Start. Oh, sorry. Control Z. Just I will delete these lines. Okay. Just to show the difference. Okay. Now arc again. Specify start point. Start point is this one. And then there is we need end point and direction. End point and we'll click end and then show the specify the end point, and then there's a direction. You can see before we are using angle. Now I will use the direction. This is direction. I will click the direction. I'll just write D and press enter. Direction. Now you can see this direction. In which direction you want to, like that. Okay. Specify tangent direction for the start point of arc. Okay. Start point. You can say this is the tangent coordinate you can write, or otherwise like this you can specify like this. So for example,
I will click here. So this is the tangent. Okay, next is let me try one thing. Maybe I will find the answer. Angle. Yes, angle. Oh. Yes, it means that you can say this is 180. Maybe I will find it later. But what I conceived, maybe this one is 90 degree, this one, and 90 degree is this one, because it's straight perpendicular. And here you can see this is 45 degree, and this is also 45, and maybe it is showing 90 degree. And this one is this was about 45. 45 mean maybe 22.5 and 22.5, like that. It is calculating. But now if I want to find the angle, maybe it is not showing. So I will find, if anyone has the answer, you can tell me. But how to find the angle? So this angle, maybe another command we need to find this angle. So it will not mention arc, radius, angular. These are the different dimensions, and we will write, for example, arc length and quick. Oh no. Okay, no, leave it. So I will find. I think so. The what I'm showing सर you. अगर हम जो है वो जी जी एंगुलर को ले पॉइंट को लाइन को सेलेक्ट करें, दूसरा जो हमने कर्व आर्क बनाई तो आई थिंक वो एंगल दे। इधर किस तरह करूँ, किधर दोबारा बताएं। सर एंगुलर पे आ रहा है 180 डिग्री। एंगुलर को सिलेक्ट करें ना, एंगुलर मैंने किया है, पहले नहीं हो रहा ये। इस पे क्लिक किया और इस पे आर्क किया। को सिलेक्ट करें, आर्क को भी सिलेक्ट करें। आगे आया था ना पॉइंट। अच्छा एक मिनट एंगुलर इस पे क्लिक किया, इस पे किया आर्क। यस सर। नहीं, आर्क पे मैं कर रहा हूँ ना, नहीं हो रहा ये देखिए, नहीं कर रहा। यही तो मसला है। हालांकि पहले हम यही करते रहे, लेकिन ये इस पे नहीं कर रहा। एंगुलर पे मैंने क्लिक किया और मैं देख, आपके आ रहा है इधर। यस सर। सर ये लाइन पे नहीं, आर्क पे करें। अच्छा एक मिनट ठहरे, आर्क पे मैंने, लेकिन ये अच्छा ये वाला नहीं, ये 180 डिग्री शो कर रहा है। देखिए पहले भी आपने किया 90 है, ये वाला 90 था। अच्छा हाँ, ये 90 कैसे इसने शो किया? ये देखिए ये 90 है, लेकिन ये कैसे बता रहा है कि ये 90 आपने है? आगे भी किया था तो ये शो कर रहा था। नहीं अभी ये 90 कैसे बता रहा है? ये 90, ये तो 80 बनता है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक तो 80 सर ये बनता है, 90 कैसे हो? पॉइंट हाँ? ये 45 कैसे है? ये मैं, मुझे जो समझ आई है वो ये है, बट आई कंसीव दैट ये 180 का मतलब है कि 90 डिग्री ये वाला हो गया और 90 ये हो गया, टोटल ऐड करके बता रहा है। या सर वो एक पॉइंट पे 90 ले रहा है ना, तो एक पॉइंट पे 90 और दूसरे पे भी 90 है, 180 हो गए। हाँ बस यही है। फिर 45 का मतलब ये 22.5 ये और 22.5 सही है, इसी तरह है। सही है, वो हमने इसी ठीक कवर किया। चले, दैट्स नाइस। आपका रोल नंबर क्या है? रोल नंबर बताया ना जिन्होंने बताया अभी मुझे। सप्ताह बताओ ना। रोल नंबर बताएं। 31 है। कितना है?
सप्तान का रोल नंबर क्या है, किसी को पता है? सर 31। 31, ठीक है। इंटरनेट का मसला है। अच्छा अच्छा, ठीक है, 31। सर चले ठीक है, अपना चले शिफ्ट करवाया था ग्रुप, तो आप चले नाइस। 31 के हम 10 नंबर लगाते हैं, ये बड़ा अच्छा पॉइंट, क्योंकि मैं अभी इसमें जो है ना मुझे समझ नहीं आ रही थी। दैट्स नाइस, दैट 10 पॉइंट एक्स्ट्रा लगा देते हैं। एक और भाई भी साथ बता रहे थे कुछ, उनका क्या है रोल नंबर? सर 1 2 3। 1 2 3, हाँ, इन्होंने भी कुछ शेयर किया है, तो इनको भी हम वो दे देते हैं 5 पॉइंट। अच्छा चले आगे चलते हैं। अच्छा, the next point is, for example, here we were using start and angle is okay, start and direction is okay, and if I want to yes, direction, if I want to specify direction from the command window, how will I will define? For example, you will tell me, if you know, then you will tell me, okay, कि मैं इसमें कैसे इसको how I will define. For example, I इसको delete करता हूँ, let me delete this one like that. Now R command. Now I want to use start and direction, okay. Start is okay, this one is start point. End point, I will click end, and then this one. And then direction. Direction I want to write in the command window. How I will write? Anyone can tell me? You can see this is the direction in this way. If I will press control, it will go upward, okay. I will यानी control को मैंने छोड़ दिया, I will not press control, it will be in the bottom. And if I will press control and press hold, I will click, it will be above the line, okay. So just press the control to switch the direction. So okay, this one also done. Then start and radius. Start and radius, again R command. You can start and radius, you know this directly, you can click here, but I want to show you from here. R command, arc, start and radius. Start is this one, okay. Then end mean I will click end, and then this is end, and then there is a start and then radius. Yes, radius I will click radius, okay. So radius I will define the radius. Now you can say it is the direction is downward. If I will want to write this, I will shift this upward in opposite direction. I will press the control, so you see it opposite. No, it's opposite. Whether I'm moving the mouse upward or downward, it will be upward. I am just hold. मैंने hold किया हुआ है कंट्रोल को hold करके रखा हुआ है, और ये देखें ऊपर ही है. अब कंट्रोल को छोड़ दिया, अब ऊपर जाऊं या नीचे, you will see that it's downward, okay. So specify the radius of arc. For example, I will specify 4 radius. So you will see the radius of the arc will be 4. So 4 maybe, yeah, we can find maybe 4 will be actually linear distance from center point to this point. Oh no, was what? This was radius. Yeah, radius, sorry. So radius mean center point to this one will be 2 point. We defined, I think so, we defined radius, I think so, 4. So why it's not showing 4? For example, we can say start and radius. Start and radius. So for example, I will arc, start, end, this one end, then radius. I will click the radius. So it shows specify the radius of the arc. Okay, radius of the arc. This arc radius. So for example, I will write 5. So it is 5. Now again, I will write, for example, arc, start, end, and radius. Radius, I will write 10, for example. Yeah, 10 is lesser. This one 10. So how I will measure with the dimension. किस तरह measure करूंगा, वो बता सकता है कि इसका radius 10 है. डायमेंशन में जाके रेडियस पे जाके किस तरह जाऊं, दोबारा बताएं.
सर डायमेंशन में जाके रेडियस को क्लिक करें और आर्क को क्लिक करें तो आ जाएगी। लेकिन ये रेडियस 10 है कौन सा, ये रेडियस इस ये तो चले हो गया ना, ये 5 है, लेकिन 5 कहाँ से है, ये डिस्टेंस है कहाँ से, ये मैं पूछना चाह रहा हूँ। ये माउस ऑफ कर दें आप, माइक ऑफ कर दें अपना। अच्छा, इसमें ये रेडियस 10 है कैसे, कहाँ से मेजर हुआ है एक्चुअली, ये तो चले इसने बता दिया रेडियस। वंडरफुल, मे बी रेडियस शेडर से ही if होगा I शायद। yes, I will draw the circle, for example I will draw the circle at the center and I will specify the radius of 5, for example, yes 5, and then I will draw the circle in the center and I will specify radius 10. You can find the difference. Can you find the difference? सर ये भी 10 रेडियस की आर्क होगी ना, तो अगर हम इसको बड़ा करें तो सर्कल हमारा बड़ा ही बनेगा। ये देखें ये 5 की है ना, यस ये देखें जो 5 वाला था ना, ये देखें 5 वाला मैं ऊपर लेके जा रहा हूँ मूव हॉरिजॉन्टली, ये देखें इसकी आर का वो आपको नजर आ गया, यस वंडरफुल आर्क का वंडरफुल। पार्ट है। अच्छा अब मैं इसका करता हूँ 10 वाले का करता हूँ, तो 10 वाले को मैं मूव करता कॉपी करता हूँ, 10 वाले को सिलेक्ट करके कॉपी करता हूँ, राइट क्लिक किया और यहाँ से ये देखें 10 वाले को मैं जब करीब लेके जाऊंगा तो ये देखें इसको जब ये देखें ये 10 के पास जाएगी तो 10 पे ओवरलैप कर रही है, देखें नीचे लाइन जो नजर आ रही है ये वाली लाइन, ये जो है इसमें देखें एंड पॉइंट पे ये 10 है, तो ये 10 है असल में, आप यहाँ से कंफ्यूजन दूर होगी, ये 5 पे नहीं जा रहा, समझ रहे हैं, ये असल में था। आप सप्ताह नहीं बात कर रहे हैं ना, नहीं ये कौन सर, थे 1 अभी 2 किसने बताया? 1 2 3 अच्छा अच्छा 1 अली 3 ने, अब्दुल्ला। अच्छा अली अब्दुल्ला ने बताया, ठीक है वेरी गुड, 5 पॉइंट और देते हैं आप, पहले भी 10 करते हैं, आपने सारा बताया। अच्छा चले वंडरफुल, ये देखें ये भी हमारा हो गया, ग्रेट। अब हम ये करते हैं कि इसको डिलीट करते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। अच्छा कोई बता सकता है अगर मैं ये लाइनें सारी डिलीट करना चाहूँ, एक लाइन छोड़ना चाह रहा हूँ, कंट्रोल ए से सारी होंगी, मैं ये 3 4 इकट्ठी डिलीट करना चाह रहा हूँ, कैसे सिलेक्ट करूँ? क्या करूँ? इस तरह मैंने 4 लाइन सिलेक्ट करके मैं इकट्ठी डिलीट करना चाह रहा हूँ, हो सकती है पॉसिबल वैसे? सर वो कंट्रोल ए से ड्रैग करें तो सारी सिलेक्ट हो जाएगी। कंट्रोल ए से तो सारी हो गई ना, कंट्रोल ए हो गई है सारी, मैं एक नहीं करना चाह रहा, ये इधर भी नहीं करना चाह रहा, ये वाली भी डिलीट नहीं करनी, ये जो मेरी 2 लाइनें इधर भी एक नहीं करनी। सर कंट्रोल 6 से कर लें। कंट्रोल क्या करूँ? नहीं यार नहीं हो रही, बहरहाल आपके हुआ है तो मुझे बताइएगा, फिलहाल मैं 1 बाय 1 करता हूँ, ठीक। चलिए ये हो गया, उसके बाद आगे चलते हैं, स्टार्ट एंड रेडियस भी हो गया, सेंटर स्टार्ट एंड, सेंटर स्टार्ट एंड, ठीक है। अब सेंटर स्टार्ट एंड लेना है तो अगेन आर्क सेंटर, सेंटर हमारा ये देखिए, आप यहाँ से नहीं करना, आप शुरू से सेंटर को प्रेस करना पड़ेगा, सेंटर, तो हमें सेंटर पॉइंट इसका देता हूँ फॉर एग्जाम्पल ये है स्टार्ट, अब वो कहता है स्टार्ट, तो स्टार्ट तो ठीक है, स्टार्ट मैं यहाँ से लेता हूँ, मेरा स्टार्ट है, और उसके बाद पूछता है स्टार्ट एंड पॉइंट, ठीक है, तो एंड पॉइंट जो है वो इसका मेरा ये एंड पॉइंट फॉर एग्जाम्पल, तो ये देखिए एंड पॉइंट स्टार्ट सेंटर एंड। अब सेंटर स्टार्ट एंगल, सेंटर स्टार्ट एंगल, ठीक है, सेंटर स्टार्ट एंगल याद रखना, इसको हम करते हैं, ओ सॉरी, center start angle, okay, arc center start angle, this one center start arc center, this one click center, I will specify the center point and then specify this start it shows I will start for example here, and then if I will start from here it will be the direction will be downward, otherwise upward. If I will starting point is at the right side of the center, I think direction will be upward. So now specify starts center start angle, no angle, so I will click angle here, angle, now I will show the angle, okay, for example this you can see ortho off, oh, sorry ortho off, so angle for example angle
specify included angle, hold control to switch the direction also. Angle, for example, I will write 90. So you see it's right 90-degree angle. So for example, again, R command, center, this is center point, and then start point. This is the start point, for example, and then there is an angle. So this angle, for example, 135-degree angle. So you see the angle is 135. From here it is 135. So how to measure 135? Just draw the line here, and this angle is actually 135. If I will write here this angular, so this line and this line, so this is actually 135. So in this way we can draw the lines. This one done. Now again, start center start angle. Now center start length. Center start length. Okay, because I'm focusing these are arcs, because last two lectures I didn't focus these arcs. So today I am stressing all the arcs points so that we can cover this, because in previous two lectures I didn't cover all these points, only first point. So start center start angle अब है center start length. ठीक है, center start length arc center करके click करूंगा इधर, just click here, center, and then starting point, for example this one, and then length mean chord length, this chord length. Okay, click chord length and just specify the chord length. For example, I will say the chord length is 6, for example. Oh, 6 is very big maybe, so it is not showing. Center start length, center point, then starting point, and then chord length, click chord length, and then for example 2. So you see this is the length of the chord is 2. So 2 length is from this point to this point is length, chord length. Okay, so in this way we can draw. Okay, next is the center start length, then continue. This is continue is another, yeah, this is continue. Okay, so continue, let me try continue. Okay, yes, from the last point which you have drawn, यानी आखिरी जो हमने यहाँ आर्क ड्रा की थी ना, यानी कंट्रोल Z करता हूँ मैं, ये अब देखें आखिरी पॉइंट ये था। कंटिन्यू का मतलब है कि उसी पॉइंट से आगे लेगा। ये देखें, जस्ट द लास्ट पॉइंट विल बी द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ दिस कंटिन्यू। फॉर एग्जांपल आई विल ड्रा this line continue, specify the end point of arc. End point you can write the coordinate or just for example this one end point. So it's done. Okay, now I will again, if I will say continue, so it will start from here. So in this way you can write something like that. Okay, this is done. So this was actually the arc which we were discussing. This is an arc. Okay, this was explained in detail. Okay, all the parts of the arc. तो फर्स्ट टाइम मल्टीपल लाइंस को डिलीट करने के लिए सर ऑल्ट और जितनी लाइन सेलेक्ट करके फिर उसको डिलीट कर सकते हैं। एक मिनट मैं आपको पूछता हूँ, बात सुनता हूँ, ये भी डाल दूँ। ये देखें ना मैनुअल अब इधर भी तैयार होता जा रहा है। ये सारी आर्क्स जो है ना ये मैंने एक्सप्लेन कर दी है, तो ये मैनुअल अब अपलोड करूंगा आपको, तो आपने फिर ये वाला डाउनलोड करना है। ये देखिए, अच्छा उसके बाद सर्कल है। अच्छा आप बताएं आप क्या कह रहे थे? सर ऑल्ट प्लस सर सेलेक्ट करनी है जितनी लाइन जो डिलीट करनी है उसके लिए सर। ऑल्ट सेलेक्ट से, अच्छा ऑल्ट होगा, हाँ वेरी गुड, ऑल्ट और सिलेक्ट। ओह ग्रेट वंडरफुल। तो आपका 1 2 3 है ना? 187 ग्रेट। 10 पॉइंट इसके, क्योंकि ये जो ना ट्रिकी सा पॉइंट था। 10 पॉइंट 187 ग्रेट। सो ऑल्ट से करना है आपने। ये देखें मैं इधर क्या हो जाएगा, ऑल्ट के बगैर भी अगर हम क्लिक करें ना उसके ऊपर जो जो हमने डिलीट करनी है। ओह ग्रेट, जबरदस्त। आपका रोल नंबर क्या है? 1 2 3। यस ग्रेट, जबरदस्त। चलिए ये भी 5 हो गए। अच्छा अब ये भी काम है, ये तो फिर हम ये भी इस तरह जितनी भी सिलेक्ट करनी है जस्ट आप आर्ट के बगैर ही करें। ये देखें वंडरफुल, तो आप वो सारी डिलीट कर लें। इस पे क्लिक करें, इस पे करें, इस पे करें, ग्रेट, ये हो जाएगा सही। तो इधर हम लिख देते हैं, इधर कहीं किसी एक जगह पे लिख दें लाइन के बाद यहाँ हम लिखते हैं आर्क, इधर ही नोट डाल देते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम नोट डालते हैं, if you want
to delete multiple lines objects by left mouse click on all desired lines and delete. Second option is to press Alt and select all desired objects by left clicking mouse click delete। ठीक है, ये इस तरीके से आप जो है वो, ये हमारा रेड हो गया। चलिए आगे चलते हैं। आर्क के बाद आगे है हमारा सर्कल। सर्कल सिंपल सर्कल है, यहाँ देखें तो यू कैन सी हियर दैट सर्कल के अंदर जाएं तो ये सर्कल है हमारा। सर्कल आप लिख भी सकते हैं, ये देखें मल्टीपल ऑप्शंस हैं सर्कल में। तो सर्कल का मैं एक ही बताऊंगा, ये सारे फिर अगले लेक्चर्स में मैं सर्कल के सारे डिफाइन करूंगा, आप खुद ही इसको करेंगे, ठीक है। सर्कल जो है ना, नेक्स्ट लेक्चर जो फ्राइडे को होगा उसमें ये सारे कवर कर दूंगा। उसमें मैं आर्क नहीं कवर करूंगा, आर्क मैंने थर्ड में कर दी। अच्छा, इस सर्कल में देखें, सर्कल में स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट ऑफ सर्कल। तो फॉर एग्जांपल सेंटर पॉइंट यहाँ से मैं पॉइंट डिफाइन भी कर सकता हूँ, या मैं इधर लिख देता हूँ सेंटर पॉइंट, फॉर एग्जांपल मेरा ये सेंटर पॉइंट। उसके बाद वो कहता है स्पेसिफाई सर्कल रेडियस ऑफ सर्कल, 5 रखता हूँ तो ये 5 रेडियस का सर्कल ड्रा हो गया, ठीक है। इस तरीके से आप ड्रा कर लेंगे, डाया वाला भी कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद सर्कल के बाद आगे चलते हैं स्पलाइन। स्पलाइन इट इज द कंटीन्यूअस आर्क इन व्हिच यू कीप ऑन स्पेसिफाइंग द पॉइंट्स लाइक यू डू फॉर एंड आर्क टू फिनिश। स्पलाइन, ठीक है, स्पलाइन करना है तो आप एस स्पलाइन लिख दें, या इधर भी स्पलाइन आ रहा होगा कहीं, ड्रा में जाएं। सो यू कैन सी हियर दिस इज द spline, this one spline, fix fit point and control vertices, okay। तो S spline लिख दें, fit points are control vertices। For example, S spline. So here you can see I will point the first point, then next point, then next point, this one, this one, this one. This is my spline. For example, you can see this is spline, okay, and you will press enter. If you will press escape, it will disappear, okay। So this keep it in mind. I also put the note here, you will not press escape, you will press enter. This is sometimes escape, sometimes enter, but here you will write the like this spline. So this is the spline, okay, and press enter, so it is like this. Now for example, you will click it here and you will click this arrow, so you can convert from fit to control, because you see here this is the spline is control vertices. Control vertices mean you can see it is the triangle like this. These are the points in these points. You can see the line points of the lines will this spline will follow those points, and press not escape. You will press escape. It will be, you see, disappear. आप spline में देखें control vertices में, ये देखें जो लाइनें बन रही है ना, ये लाइनें वर्टिकल पॉइंट्स जो हैं आपको उनके दरमियान स्पलाइन बन रही है, उधर डायरेक्ट बन रही थी। इसमें एंटर प्रेस कर दें, ये आ गया। अब इसको आप सिलेक्ट करेंगे तो ये देखें, ये जो लाइनें हैं इससे आप एडजस्ट करेंगे इसको, ये देखें, इसको इधर एडजस्ट करना है, ये ऐसे इसको ऐसे करना है, ठीक है। तो इस तरह करेंगे। इसको देखें तो इसके पॉइंट्स ये हैं ऐसे, ये पॉइंट्स पे हो रही है। अब इसको भी अगर आपने सप्लाई ये कंट्रोल वर्टिसेस वाला करना है तो ये फिट से आप कंट्रोल वर्टिसेस में क्लिक कर दें तो ये देखें अब ये कंट्रोल वर्टिसेस पे हो गई है, देखें ये कंट्रोल वर्टिसेस आ गए, ठीक है। और इसको आपने कंट्रोल से फिट में करना है तो फिट में कर दें तो ये देखें ये फिट में हो गई है, सही। इस तरीके से आप जो है वो इसको कर सकते हैं। चलें जी आगे चलते हैं।
नो नेक्स्ट पॉइंट इज एलिप्स। एलिप्स ड्रा करनी है तो एलिप्स आप देखें यहाँ एलिप्स लिख दें, या फिर आप जो है वो यहाँ से ये एलिप्स है ये, और इधर भी ड्रा करना है तो यहाँ भी एलिप्स आपको ये आ जाएगी। सेंटर भी है, एक्सिस भी है और आर्क भी है, ठीक है। सेंटर वाली करें, इसमें स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट, ये सेंटर पॉइंट है मेरा, नहीं मैं सेंटर पॉइंट इसका वही लेता हूँ एलिप्स में ड्रा, स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट मैं ये ले लेता हूँ, और स्पेसिफाई एंड पॉइंट मेरा ये है, तो ये एलिप्स बन गई, ठीक है। और उसके बाद कहता है स्पेसिफाई डिस्टेंस टू अदर एक्सिस, सो दिस डिस्टेंस एक्चुअली this distance for example I will say that this is my 2 distance. 2 mean this distance will be 2 and this distance was the end point I will specify. This is distance 2. For example I will from here to here it will be 2, okay, like that. So in this way will be, and then there is a hatch, ellipse, and also ellipse. For example here ellipse I will next option. This is axis and end, axis and end. For example, ellipse, specify the axis end point of the ellipse. And same procedure ये arc center वाला आप specify कर सकते, axis end point of ellipse, ठीक है। end point ये है इसका, specify other end point, ये end point दूसरा है इसका, 2 end point आपने ellipse के बताए हैं, ठीक है। उसके बाद कहता है specify distance, ये distance वो खुद ही बताएं आप, तो मैं इसको 2 रखता हूँ, तो ये इस तरह आ जाएगा, ठीक है, इस तरह भी लिख सकते। और अच्छा इसके बाद next for example I will write in the ellipse elliptical arc, specify axis end point of elliptical arc. For example ये मेरा end point है, specify other end point, ये मेरा दूसरा end point है, specify distance to other axis. अब other axis पे distance मेरा कितना है ये देखिए, ये distance, और इसमें ये रोटेशन भी दी हुई है इसने कुछ, ये रोटेशन से भी specify rotation around major axis, ये जो भी करना चाहें आप कर लें, ठीक है। स्पेसिफाइड स्टार्ट एंगल, अब आपने स्टार्ट एंगल देना है, स्टार्ट एंगल मेरा फॉर एग्जांपल 50 है, तो ये 50 डिग्री से शुरू हुआ, और फिर मैं कहता हूँ स्टार्ट एंड एंगल 50 से शुरू हो गए, ये 180 पे जाए फॉर एग्जांपल, तो ये देखिए 50 डिग्री से 180 तक इसने वो एलिप्स लगा दिया। तो ये एलिप्टिकल का हमें, ये जो एलिप्टिकल था ये इस तरह लगाते हैं स्टार्ट एंगल। ये दोबारा एक दफा करते हैं, elliptical start, specify end point, this is end point, specify other end point, this one। उसके बाद पूछ रहा है specify distance to other axis, ये एक्सिस का डिस्टेंस हम 2 ही ले लेते हैं फॉर एग्जांपल। उसके बाद specify एंगल, ये एक्स्ट्रा पॉइंट जो है पूछता है, ये 2 स्टार्ट एंगल और एंड एंगल पूछता है, तो मैं स्टार्ट एंगल लेता हूँ फॉर एग्जांपल मेरा 90 है और एंड एंगल 270 है, तो ये देखिए 90 से 270 तक इसने ड्रा कर, तो ये इस तरीके से आप जो है वो, तो एलिप्स भी हमारी सारी इसमें कवर होगी। उसके बाद हैच है, हैच क्या है, हैच ये है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास क्लोज कोई पॉइंट है, ये फॉर एग्जांपल है, ठीक है। अच्छा हैच में हमने क्या करना है, बी हैच लिखना है कमांड में, बी हैच ये लिखा हुआ है इधर, ये बी हैच लिखें, किधर है ये बी हैच लिखें, ठीक है। या फिर ये कमांड विंडो में, या फिर इधर से लिख दें, इधर ये हैच आ रहा है, ठीक है, ये, या इधर ड्रा में जाएं और हैच लिख दें। अच्छा इसके अंदर रीजन भी था, ये रीजन जो है ना इसको भी आप कर सकते हैं, बाउंड्री भी है, बाउंड्री और रीजन में 2 चीजें बता दूंगा आपको। बाउंड्री तो मैं इसके अंदर आता है ना, हाँ ये बाउंड्री इसमें आता है, हैच के अंदर ही आता है। फॉर एग्जांपल ये लाइंस ड्रा की है ना मैंने, ये फॉर एग्जांपल ये देखें, ये मैंने लाइन ड्रा की है, अब ये देखें लाइंस हैं, ये सारी लाइंस हैं, इसको मैं बाउंड्री बनाना है, इस पे बाउंड्री पे क्लिक करूं, बाउंड्री पे क्लिक करके पिक पॉइंट पूछ रहा है, पिक पॉइंट पे जाके मैं इस पे क्लिक करूंगा ना, तो ये इसको, और राइट क्लिक करूंगा तो ये देखिए आप बाउंड्री बन गई, ये देखिए बाउंड्री, ठीक है। इसको मैं मूव करता हूँ फॉर एग्जांपल, इसको इधर से लेके मैं मूव करता हूँ, कॉपी मूव करता हूँ, यस, तो यहाँ से इसको मैं यहाँ से उठा के इधर मूव करता हूँ, तो ये देखिए आप जो पहले वाली थी वो आपकी वो लाइन्स ही हैं, और ये बाउंड्री वाली जो है ना एक अलहदा से उसकी बाउंड्री उसने बना दी है, और ये बाउंड्री जो है वो अलहदा से आपको नजर आ रही है, ये वो सप्लाइन वाला वो बन गया ऑप्शन, इसको मूव कर सकते हैं, लेकिन ये लाइन्स ही रही है, ठीक। तो किसी भी चीज़ की बाउंड्री बनानी है तो वो भी हैश के अंदर ये बाउंड्री वाला ऑप्शन है, ठीक। अच्छा अब हम हैश के अंदर देखते हैं, ये ड्रा के अंदर जो हैश कमांड थी ये, तो हैच के अंदर देखें तो ये आपकी विंडो ओपन हो जाएगी इस तरह की, ये देखिए इस विंडो में ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं, ये हम करेंगे। फिलहाल पैटर्न जो है हमारा फॉर एग्जांपल कोई भी पैटर्न रख लें, ये रखे है, और इसमें पिक पॉइंट पूछ रहा है, पिक पॉइंट पे क्लिक करें और जिस पे हैच करना है ये कर दें, ये देखिए कर दिया, ठीक है।
अब इसका डिस्टेंस आपने कम करना है, 1 है तो आप इसको 0.5 कर दें, ये 0.5 हो जाएगा, 0.1 कर दें, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप इसका 0.2 कर दें, ये आपकी ये बन गई। अच्छा, इसी तरह आपने पिक पॉइंट करें, इसको कर दें, और इसको आपको डिफरेंट वो दे सकते हैं, ये और सारी सिलेक्ट है। फॉर एग्जाम्पल मैं हैच करता हूँ, इधर से कर लेता हूँ डायरेक्ट हैच, और इधर से जो है वो मैं ये देता हूँ, इस पे क्लिक कर दे, ठीक। स्पेसिफाई इसको 0.5 कर देता हूँ, तो ये इस तरीके से। अब इसको ये भी कर सकता हूँ, ये देखिए इस तरह जो है वो, ठीक है। इसका 0.5 1 करके देखता हूँ, 0.1, तो ये बैरल वो छोटी है ना मेरे ख्याल, शेप को बड़ी बनाए। अच्छा हैच, चले कोई और पॉइंट लेते हैं इस तरह, ठीक। तो ये आप बैरल इसमें चेंज कर सकते हैं, बाई लेयर भी आप इसको हैच की कमांड में जाके सिलेक्ट करके इसको सिलेक्ट करेंगे, इसको चेंज करना चाहें इस पे जस्ट यू विल सिलेक्ट इट हियर, and वो हैश कमांड अगेन देयर, तो यू कैन चेंज एवरीथिंग। फॉर एग्जांपल color, this is the background color, you can see this is the background color and this is the hatch color. So red is hatch color now, you can see, and this is the hatch color, and background color is, for example, blue. So you see this is the blue color is the background color. So in this way you can draw the hatch. So now for example, this one gradient. So gradient again, you can pick point here, click, and different gradients you can use. Layer color you can change. So from hatch gradient, pick point, this one, okay. So in this way, for example, I will change the color. So different patterns will be available. For example, color this one. So you see different patterns based on the combination of the colors. So you can change anything. So like that. Gradient tint shade, like that, okay. So tint shade 50%, like that, okay, 1%. So in this way you can change angle, for example, 50 degree, like that. Hatch transparency 50, like that. Transparency mean the background now is showing. For example, 10, not. Transparency 100, 100. Oh, sorry. Escape, enter. Transparency 100. 50. It is showing 50. Background grids, you can see now grids are seen. 60, 90. Now you can see everything is shown. So in this way, transparency you can change. 70. So in this way you can change. So hash command also, okay. Now we'll go m text line, multi-line text, okay, multi-line, m text, you can say multi-line. So line text, for example, you want to write text. So how will you write the text? So draw, here is the text, multi-line or single line. For example, multi-line, m text, you can also write m text. Specify the first corner, for example, this one. Now specify the opposite corner. This is opposite corner, for example. So you can see here you can write the text. So for example, I will say this is my first lab, this is my third lab, third ED lab. Enter everything, for example, like this, anything you can write, and you can control A and you can just specify middle like that.
let me change the size first. Where is the size? Can you show me size? This one, I think so. 10. Yes. 5. 2. Okay, so you can see in this way you can change the size. And color, red. Color you can change. This also okay. So bullet, for example, select it and bullet. Bullet. Numbered. You can number it. You can bullet. You can lettered. Lowercase. This is lowercase lettered. And uppercase letter like this. Line spacing. You can increase line spacing. Middle, center. This one you can see center. Okay. सर ये सेव कैसे होगा टेक्स्ट सेव ये हो गया ना सेव सर ये एंटर क्लिक करके हुआ एंटर तो मेरे ख्याल मैंने एंटर किया एस्केप की कमांड में से मैंने वो किया दोबारा कर लेते हैं लेट्स ड्रॉ टेक्स्ट अब मैं सिंगल लाइन करता हूँ ठीक है सिंगल लाइन स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट ठीक है ये स्टार्ट पॉइंट हाइट पूछ रहा है अब हाइट ठीक है हाइट में 5 दे देता हूँ फॉर एग्जांपल स्पेसिफाई रोटेशन एंगल 0 रखते हैं चलिए आप देखें ये आ गया सिंगल पॉइंट ये इस तरह लिखें कोई भी लिखें कुछ लिख के एंटर इस तरह लिखते जाए अच्छा उसके बाद मैंने इसको खत्म करना है कमांड को तो ये देखें बाहर क्लिक किया तो ये दूसरी कमांड शुरू हो गई ये देखें जिधर क्लिक कर रहा हूँ ना ये देखें ये सिंगल टेक्स्ट वाला कर रहा हूँ पहले मल्टी टेक्स्ट किया था ये तो लिख रहा है एंटर करता हूँ तो ये दूसरी लाइन पे चला जाता है एस्केप प्रेस करूंगा तो ये देखें वो खत्म होगी कमांड ठीक है तो एस्केप से हो रही है अब इसको मैंने सेलेक्ट करना है तो वही बारी बारी सेलेक्ट करना पड़ेगा इसको मैं डिलीट करता हूँ सेलेक्ट करके दोबारा आते हैं हमारा अपनी लाइन पे ठीक है अब हम चलते हैं नेक्स्ट ये टेक्स्ट भी हो गया सेटिंग द लाइन प्रॉपर्टीज आपने सेट करनी है फॉर एग्जांपल इस लाइन पे क्लिक करें एक तो इस लाइन पे डबल क्लिक करें तो आपको देखें ये कलर बता देगा कलर आप इधर से भी शेयर कर सकते हैं रेड कर दें इसका लेयर भी चेंज कर सकते हैं लेयर इधर 3 ही आ रही है अभी ये देखें यानी लाइन टाइप चेंज कर सकते हैं लाइन टाइप आप देखें इधर 3 ही है तो अब इसमें से कोई डैश वाली लाइन डालनी है इसके अंदर तो कैसे डालेंगे पहले इसको क्रॉस करें ये रेड तो हो गई है अब इधर से जाएं ये देखें ये क्या है ये है आपका लाइन वेट है ये वेट आपने चेंज करना है अगर फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ कि वेट ज्यादा हो जाए डिस्प्ले वेट आपने लाजमी क्लिक करना है ये इसको क्लिक नहीं करेंगे तो ये चेंज ही नहीं होगा ये देखिए नहीं चेंज हो रहा आपने इसको जाके लाइन वेट में जाके ये जो चेंज किया आपने इसको डिस्प्ले वेट भी करना है ओके करेंगे तो ये देखें वेट सबका चेंज हो गया सही अच्छा उसके बाद नीचे वाला जो है ना ये दिस वन इज एक्चुअली द लाइन टाइप सो हियर यू विल फाइंड ओनली 3 लाइन टाइप्स you will press enter and you will press load here load these are the different types we will use in AutoCAD so these are the different lines for example dot line dot 0.5 and dot 2 times means you can see the 0.5 and this is dot one time 0.5 mean the distance between the dots is half as compared to this one and this is the distance double so these are the dots okay so for example this dot okay now this dot line is appearing here okay now you will see this dot line appeared here okay so now if you want to select this double click dot line is here so you will click you cannot modify the property while dragging grip oh yes we were dragging also but double click and dot so it's done yes it's done just zoom it no it's done okay like that so dot line so if you will draw the line any line this one you can select it you will see that dot line also appearing here so you will just click it this is the dot line so if you want to load any other line click here load here for example this line divide line okay and this one zigzag line okay so you want to convert this into zigzag line so just click zigzag so this is zigzag okay so in this way you can draw the different lines and properties you can also change double click these are the simple dot for example directly dot zigzag and double click color
So these are the shortcuts you can use. The remaining you can, for example, double click or right click. Just click and right click properties. So these are the detailed properties. Color, zigzag, line type. Line type, which line type you want to use. By color, line weight. Line weight, if you want to change line, yeah, like this, you can say line weight. Thickness. Thickness. For example, thickness 0, I will write 5. 5, 10. No, line thickness, you can say this line thickness, you will click it here and thickness you can change from here. It's changing or not? Yes, changing. Yeah. If you want to change more, select this. Yes, it's changing. Okay. Thickness and then visualization is okay, and then remaining is okay. So cross it and okay. So in this way you can change the different properties. Layer. Now also, for example, you want to specify the layer. This is the layer. This is the by default layer. For example, you want to here click it layer properties. This click layer properties, and then you can see here. For example, you want to add the new layer. So you just click new layer. This is actually the new layer. For example, new layer. Okay. Alt N new layer. For example, I want to specify center line. Dot line. Dot line 0.5. For example. Dot line 2, for example. 2 mean the line which is 2 times. So I will click here and dot line this one and load, for example. I will go dot line which is 2 times. This one do 2 times dot line. I will click. This is 2 times. Click it here. And now this line is actually dot 2 times dot line. Another layer, for example, I will click this one. And this is dot 0.5. Okay, so I will click this dot and then dot load here dot. इधर आप ये देखें डॉट पे मैंने क्लिक किया ये 0.5 वाली पे और इस पे क्लिक कर दिया. इधर 0.5 पे इधर क्लिक करना, इधर ऐसे नहीं होके करना, यहाँ से जस्ट क्लिक इट हियर 0.5 times. Okay, now this is 0.5 times. Okay, now I want to delete this line. This by default I want to delete. So just click this delete layer. So you see it is not deleted. Not deleted mean because this layer is by default you have selected this layer. If it is selected, you cannot delete. So you will select any other layer, double click this one. Now it is selected. Now you can delete this one. Select this one and delete. So it will be deleted because this layer is the base layer. For example, it will not be deleted. For example, this I want to delete. So it will also not delete. For example, extra line you want to delete. Selected will not be deleted. The other one, for example, I want to delete this one. So it will be deleted. But first, before deleting, I will just show you what is happening. A line, this one, this is line. And for example, in the layer, you can see now 0.5 dot is directly here. And you can see you don't need to specify the points, different layers. You dot 0.5 dot to सेंटर, इस तरह जितनी भी लेयर्स आपने बनानी है डिफरेंट डॉट्स की लेयर्स जो हैं, एक सेंटर लाइन की बना लें, एक आप सेंटर की डिफरेंट पॉइंट्स की बना लें और एक इस तरह डॉट की बना लें, डैश की बना लें, इस तरह डिफरेंट बना लें, तो इधर से आप सेलेक्ट कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल मैं ये डॉट 2 करता हूँ, ये डॉट 2 किया, इधर देखता हूँ कि डॉट 2, ये डॉट 2 ये वाला है, तो ये डॉट 2 हो जाएगा. ठीक है, तो इस तरीके से आप डॉट 2 या जो भी आपने सेलेक्ट करना है वो कर सकते हैं. अच्छा, आप लेयर को डिलीट करना है, इधर से क्लिक करें, यहाँ से बार में डॉट 2 है तो ये डॉट 2 तो डिलीट नहीं होगा. आप ये देखें, इस पर क्लिक करेंगे डॉट 5 में डिलीट हो जाएगा. ये देखें हो गया डिलीट. ठीक है, इस तरह आप डिलीट लेयर करनी है तो वो भी कोई भी लेयर डिलीट कर सकते हैं. नो, ये हमारा सारा काम हो गया. अब टास्क करना है अपने लैब टास्क 1, ये आपने खुद करना है. इसमें वो ये कह रहा है कि आप ना ये करें कि पहले शीट का जो है ना उसका ड्राइंग लिमिट सेट करें 48/80 और ये सारा मिलीमीटर्स में है तो पहले मिलीमीटर्स में सेलेक्ट करें. ठीक है, और 48/80 करें.
कैसे करेंगे मैं भी आपको करके दिखाता हूँ। कंट्रोल ए डिलीट। कैसे किया था लास्ट टाइम हमने? एक तो यहाँ से किया था ना, जस्ट हमने यहाँ से यूनिट्स में गए थे यहाँ से, लेकिन यहाँ से हमने देखा था वो चेंज नहीं हुआ था ये। वो फिर हमने एक नई कमांड ली थी। इधर इधर भी है वैसे ड्रा में, किधर बरा ये यूनिट्स, ठीक है। इधर से पहले यूनिट्स चेंज करने से पहले ड्राइंग लिमिट हमने चेंज करनी है, ठीक है। तो ये है ड्राइंग लिमिट, ये वाली, ये देखिए, इस पर क्लिक कर दें तो ये आपका ड्राइंग लिमिट 0 है बाय डिफॉल्ट। तो हमने करनी है 0 और 48/80, ठीक है। तो पहले हम इसको मिलीमीटर में करेंगे, ये मिलीमीटर यूनिट्स है हमारे, इंचेस में पहले मिलीमीटर में करेंगे, फिर लेंथ डिफाइन करेंगे। वरना इस वक्त जो करेंगे वो यूनिट्स में डिफाइन हो जाएगी। 48/80 जो है ना, 48/80 जो है ये अब, ओ सॉरी, वो 0 वाली हो गई है। दोबारा करते हैं। ड्राइंग लिमिट्स को LIM से भी आप कर सकते हैं, उधर से भी कर सकते हैं, लिमिट से भी कर सकते हैं। तो ये 0 ही है। उसके बाद अपर जो है 48,80। तो ये अब चेक करनी है आपने, तो लिमिट्स में जाए, ये देखिए 0 है, दोबारा 48/80 ये हो गई है, ठीक है। लेकिन ये इंचेस में हुई है, क्यों? अच्छा, आप कोई बंदा बता सकता है? एनीवन टेल मी दैट लास्ट टाइम वी चेंज द यूनिट्स by entering the command. What's the that command? Just show me, tell me what I should write in this command. DWG units. DWG units. इससे तो हाँ, वेरी गुड। डैश भी लिखें या डैश के बगैर भी आ जाता है, वेरी गुड। मिलीमीटर में है ना हमारा, तो मिलीमीटर है तो 3 लिखना पड़ेगा, 3। तो 3 एंटर करेंगे। आपने, आपका रोल नंबर क्या है जिसने अभी बताया? 31 सर, 31। हाँ ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब देखें 3 लिखेंगे, क्योंकि मिलीमीटर में है तो 3 लिखेंगे। इस पर क्लिक करके इसको दोबारा भी देख सकते हैं, ये इस तरह 1 इंचेस 2 फीट 3 मिलीमीटर, 3 लिखेंगे। 3 लिख के एंटर किया। उसके बाद दोबारा इस पर क्लिक करके इसको जरा मैग्नीफाई कर लें। ये 1 डेसिमल टू 1 सेंटीमीटर टू डेसिमल, तो हमने 2 ही रखना है, तो 2 इज ओके, एंटर कर दें बस। 4 प्रिसीजन इज ओके, remaining also yes, no need to change, no is okay. Now if you will see here units, drawing units like that, you will see it is converted into millimeter. Okay, so units, I think so units you can also UNIT when you write units, so it will also appear here like that. So it is converted out. Now you will see, drawing limits. For drawing limits, anyone know what's the what I should write in the command window if I want to show the drawing limits? Limit, yeah, limit. Limits. Yeah, great. LIM 0 48, 80 ये करूंगा। वो पहले वैसे वही था, दोबारा एंटर कर दिया तो जो है वो ये हैंग हो गया हमारा, ठीक है। AutoCAD हमारा हैंग हो गया। अच्छा चलें, इसको हम कंट्रोल ऑल्ट डिलीट करते हैं। टास्क मैनेजर में गए, AutoCAD को हमने सेंड कर दिया। अच्छा चलिए, ये भी हो गया हमारा। अब हमने वो लिमिट करने के बाद देन वी विल स्केयर बॉक्स के अंदर ये चीजें ड्रा करनी है, ठीक है। अब आप करेंगे सारी करके मुझे दिखाएंगे, ठीक है। तो ये 1 बाय 1 करेंगे, ग्रुपिंग में कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये टास्क देखें, ये कितने हैं? ये टास्क हैं, पहला जो है ना ग्रुप वो ये करेगा, पहला टास्क सर्कल ऑफ रेडियस 12 करेगा, ठीक है। और तरतीब से करते हैं हम, ठीक है। हमारा सेक्शन है C। पहला जो है वो करेगा ये वाला काम, सर्कल 12 रेडियस का सर्कल ड्रा करेगा, लेकिन करना किसमें है? एक स्क्वायर बॉक्स के अंदर। और अगले ने स्क्वायर ड्रा करना है ऑफ साइड्स 20 मिलीमीटर, 20 मिलीमीटर साइड्स का स्क्वायर ड्रा करना है। तो ये सर्कल वाले जो है भाई, C1 वाले करेंगे सर्कल ड्रा 12 मिलीमीटर का, और ये करेंगे स्क्वायर वाला ऑफ साइड्स, स्क्वायर ऑफ साइड्स 20 मिलीमीटर, ठीक है।
आप कोई भी स्क्वायर ड्रा कर लेंगे, स्क्वायर रैंडमली कर लें स्क्वायर, या उसकी भी डायमेंशन दे लें, जो भी करना है उसके अंदर आपने एक स्क्वायर ड्रा करना है। 20 मिलीमीटर साइड्स हो उसकी, स्क्वायर है ना, सेम होगी साइड्स। थर्ड है ट्राइंगल विद एंगल्स दिस, ये मैं आपको एक दफा करके भी दिखाता हूँ। ट्राइंगल विद एंगल्स दिस, ये वाली आपने ड्रा करनी है, ठीक है। अब वहां आपको F12 दोबारा प्रेस करना है, ये मैंने रेड में लिखा हुआ है, मैनुअल दोबारा डाउनलोड करना। ये F12 जो शुरू में आपको मसला आ रहा था, वो असल में वो जो पहली कमांड आ रही थी वो एंगल और जो लेंथ बताता है, वो असल में ये वाली चाहिए होती है हमें एंगल बताने की। और एक ट्राइंगल ये ड्रा करनी है, अगले ग्रुप ने C1 ये करेगा एक स्क्वायर के अंदर, C2 जो है वो एक स्क्वायर के अंदर ये वाला स्क्वायर ड्रा करेगा, C3 जो है एक स्क्वायर के अंदर ये वाली ट्राइंगल ड्रा करेगा, C4 जो है वो एक स्क्वायर के अंदर ये वाली ट्राइंगल ड्रा करेगा, और C5 जो है कितने हो गए, C5 जो है वो ये स्क्वायर और देयर्स 4 कॉर्नर एट द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स ऑफ एनी स्क्वायर बॉक्स, ठीक है। यानी स्क्वायर विद देयर्स 4 कॉर्नर्स, जो इसके 4 कॉर्नर्स हैं एट द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ एनी स्क्वायर बॉक्स। तो वो जो ऊपर स्क्वायर बॉक्स होगा, हर ये तो वो आपके उसमें होने चाहिए, उसके कॉर्नर पे होना चाहिए स्क्वायर, समझ रहे हैं ना, उस कॉर्नर पे होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद राइट योर रोल नंबर, ड्राइंग बेसिक डेट एंड योर सेक्शन इन दिस सिंगल 6 रेक्टेंगल फाउंड बिलो। तो ये आपने जो कहता है राइट योर नेम, रोल नंबर, ड्राइंग नंबर 3, ड्राइंग टाइटल 4, डेट एंड योर सेक्शन इन दिस सेक्शन 5 इन दिस 6 रेक्टेंगल्स फाउंड बिलो। ये कौन सी 6 रेक्टेंगल कौन सी बनाई है आपने, ये बता रहा है ये। तो ये आप जो है ये करेंगे, मेक सेंटर लाइंस इन द सर्कल यू हैव मेड एंड चेंज द लाइन टाइप ऑफ स्क्वायर टू डैश, स्क्वायर टू सेंटर लाइंस इन द सर्कल यू हैव मेड। हाँ, इसके अंदर जो है ना सेंटर लाइन बनानी है अगर आपने, तो इसके लिए भी मैं आपको बता दूं थोड़ा सा, ये अभी रन हो रहा है। इसमें यह है कि आपने ऑटोकैड के अंदर एक ऑप्शन है, और ये कुछ और भी ऑप्शन है, ये कल लेक्चर जो फ्राइडे को होगा उसमें कुछ कवर कर दूंगा। कई चीज़ें और भी हैं जो रहने करने वाली हैं। इसमें ये देखें, ये आपने इसमें लिखना है, आप खुद लिखें इधर, अगर आपके पास ऑटोकैड है, मैं भी लिखता हूँ, ये मेरी ऑटोकैड ऑन हो तो इट विल टेकिंग मच टाइम। कंट्रोल और डिलीट, टास्क मैनेजर, AutoCAD plus yes, done. Now you will see here some other commands. I will write it here. For example, here you can see you will draw the circle. For example, here this is the circle. Oh, this is the circle. Now you will write a center mark. So you will write a DIM, dimension center. Okay, dimension center. You will write dimension center. DIMCNTER, center. Dimension center. Select the arc of the circle. You will select. You will see that this dimension is written here. Now you want to change the distance, the length of this dimension. So how you will change? Again, command is, if you want to change the length, line size of this, so DIM center. That was DIM CN center. This is DIM CN. DIM CN. Enter. New value of the dimension. This is 0.09 by default. You will write, for example, 5. Enter. Now you will write DIMCNTER. So select the circle. So you see, now it's changed. You can change like that. And then center mark.
center mark, for example, center mark XZ. Center mark EXE. Enter new value of center. This is on. By default is on. So if you will center mark XZ, enter. If you will off, for example, OFF off, you will see center mark is now off. Center mark EXE. Now you can see it is off. So if it is off, now you, for example, you draw the circle. Draw the circle, for example, here, and do DIMC and center. Like that. And that was off. Center mark easy on. Yes, that time I think so. Okay, this on off, I think so. This I will clear it later, maybe. Yes. Annotate. From annotate, you will see, for example, now is on, center mark is on. I will see, let center mark EXE. This is now on. It is by default on. Okay, enter. Now I will go annotate, and annotate, you will see annotate center mark and select circle. So here also the center mark here. This center mark, and then select the circle. So now you can see this is the center line. It is drawn center line because we want to draw center line for any object which is closed shape. And this is center line. So for example, center, select the circle. For example, center mark. Now I will draw, for example, home circle, another circle, for example, here. And now, for example, center mark is off. Center mark EXE is off. OFF off. Now let's try annotate. Center mark. Select. Now you will see this center mark is okay, but there is no center line. It didn't draw the center line. So that's why you have to center mark. Center mark. In center mark XZ. This is actually center line. If you want to draw on, this is on. Now it when you will annotate and select the circle, so it will also draw the center line. DIM dimension center, that is just the center point, and this is the center line. So these are the two different things. So this is okay, and then I think so remaining is okay. Now I will conclude it by drawing the Control A, delete. I will draw the circle. For example, here. This task, first task, for example, I will draw. First, I will draw the square box. So square box, for example, a rectangle, and I will specify the point. For example, 10,10. Okay, this one, and then there is a point. I can say no 10,10. No, I will specify another point. For example, 20,10. Okay, 20, 20. Okay, for your आसानी के लिए मैं 20,20 करता हूँ. ये 20,20 स्पेसिफाई अदर कॉर्नर पॉइंट, दिस वन. 20,20 के बाद अगला पॉइंट मैं कहता हूँ कि वो है 30,20. नो 30,40 लिख लेना. 40,30. ठीक है, 20,20, 40,30. ये हमारी रेक्टेंगल बन गई. ठीक है, ये हमारा 20,20 है. ये लेफ्ट कॉर्नर वाला, लेफ्ट कॉर्नर वाला, लेफ्ट बॉटम, और टॉप राइट वाला जो है ना, ये 40,20. ठीक है, इसको देखना चाहें तो ये देखें, ये लेंथ भी आप इससे
ये 10 है, ये 20 है। चूंकि ये 20,20 है ये वाला पॉइंट, इसमें 20 ऐड करेंगे तो ये 40 हो जाएगा, और इसमें 10 ऐड करेंगे तो 20 में तो 10 30 हो जाएगा। 40,30 ये पॉइंट होगा। ठीक है, अब ये मैंने आपको समझा दिया। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, अगर बताएंगे तो उसका आंसर। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ इस सॉरी ये स्क्वायर बॉक्स हमने ड्रा करना था, तो स्क्वायर बॉक्स में तो हमें फिर ये करना पड़ेगा कि 20,20 और दूसरा पॉइंट जो है वो हमारा 40,40 होगा, ताकि स्क्वायर हो। तो ये स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये 20,20, ये 40,40। अब इसके अंदर, इस सर्कल के अंदर मैंने ड्रा करना है ये वाला रेडियस, 12 मिलीमीटर रेडियस का सर्कल ड्रा करना है। ठीक है, उसके लिए मुझे आप ये बताएं कि एक तो मैं यहाँ से इसका सर्कल ड्रा करना है, तो यहाँ से सेंटर करूँ और इस पर क्लिक करूँ और सेंटर पॉइंट क्लिक कर लूँ, और उसका रेडियस कितना था, 12 था। तो मैं 12 जो है वो इधर 12 मिलीमीटर लिख देता हूँ, स्पेसिफिक रेडियस। तो 12 लिख देता हूँ, तो ये रेडियस बन जाएगा। ये सर्कल हमारा छोटा था इसलिए हमने, और स्क्वायर छोटा था उसको बड़ा करना पड़ेगा। ठीक, एक तो ये तरीका है। अभी स्क्वायर थोड़ा बड़ा करेंगे, ये स्क्वायर हमारा छोटा है। 20,20 50,50 कर लेते हैं। सही, अब ये बड़ा हो गया। अच्छा, एक तो तरीका ये था कि सर्कल पे क्लिक किया, इस पे क्लिक किया आपने और इस पे क्लिक किया, और ये 12 इसका रेडियस दे दिया आपने और एंटर कर दिया, ये सर्कल बन गया स्क्वायर के अंदर। ठीक है, एक तो काम ये है। दूसरा तरीका बताएं अब, कि जिसके अंदर इसका रेडियस जो है ना 12 लेना है आपने। अब मुझे बताएं कि इसका सेंटर मैं कोऑर्डिनेट से लिखना चाह रहा हूँ, यानी सर्कल को क्लिक करके आई विल जस्ट राइट इट हियर, व्हाट विल बी द सेंटर ऑफ दिस स्क्वायर, जो बताएगा उसके 10 पॉइंट। ये बता दूं कि ये स्क्वायर जो है इसका ये वाला पॉइंट 20,20 है और ये वाला पॉइंट 50,50 है। अब इसका सेंटर वाला पॉइंट क्या होगा, कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे इसके सेंटर के। बड़ा आसान है, मैंने चुके कोऑर्डिनेट्स इजी रखे हैं, तो कोई इतना मुश्किल नहीं। 10,25 कितना है, 10,25 दोबारा बताएं। 10,25 10,25 ये कह रहे हैं। ठीक है, 10,25 एंटर किया और सर्कल मैंने 12 मिलीमीटर का सर्कल लिया, तो ये इधर बन गया। 10,20 इधर कहीं आ रहा था, गलत हो गया। और बताए कोई। सर 30-20 30,20 कह रहे हैं, और एंटर किया, सर्कल मैंने 12 लिया, तो ये इधर बना है। ये भी सेंटर में नहीं बना। पॉइंट हमें ये वाला चाहिए, ये वाला पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट है ये कौन सा है, ये जो ये हाईलाइट हो रहा है। सर्कल की कमांड देता हूँ, वो पॉइंट इधर लिखना चाह रहा हूँ। क्या है वाला, कोई बता दे इसके। सर दोनों साइड को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 कर दें। हाँ कर देना, मुझे एक्स वाई बता दें डायरेक्ट बस। सर 35,35 वंडरफुल वंडरफुल। 20 35 30 और 12 की कमांड दी तो ये सर्कल बन गया। आपका रोल नंबर क्या है, सर 83 रोल नंबर क्या है, 83 83। वंडरफुल, आपके जन्म 10 पॉइंट आपके लग गए। ग्रेट। तो ये देखें, आपने इस तरह बनाना है। ठीक है, ये बना ली। इसी तरह आप स्क्वायर ऑफ साइड से बना दें, और ट्राइंगल, ये एक ट्राइंगल बना के दिखा देता हूँ आपको। ये वाली बना के दिखा देता हूँ। 45 आसान है, 30 60 90 की बता देता हूँ। इसको कैसे बनाना है। अच्छा, इसको हमने कैसे बनाना है, ये देखें। लाइन की कमांड ड्रा करें, इस पे क्लिक करें पहले पॉइंट पे। अब देखिए वो F12 प्रेस करना पड़ेगा दोबारा। अब F12 प्रेस कर लें, ये देखिए ये पॉइंट्स आने चाहिए। दोबारा F12 करेंगे तो ये देखिए गायब हो गए। अब हमें इधर इधर लिखना है, कमांड विंडो में नहीं लिखना है, इधर लिखना है। तो अब इस लाइन को हमने इसकी लेंथ देनी है। ये 21 बता रहा है, इस वक्त ये 31 है अगर ये लाइन, और एंगल इसका 29 है यहाँ से। ये देखिए ये 0 एंगल है और ये बढ़ रहा है। तो हमें कितना चाहिए एंगल, एक तरफ एंगल 30 चाहिए। तो मैं 30 एंगल लूंगा और इसकी लेंथ कोई भी लिख देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल लेंथ मैं इतनी बड़ी ले लेता हूँ जो कि बड़ी हो। मैं 40 ले लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल लेंथ। तो मैं क्या लिखूंगा इधर, ये जो हाईलाइट हुआ है इसका मतलब इधर डायरेक्ट यही लिखेगा। 40 लेंथ लेता हूँ, फिर शिफ्ट शिफ्ट प्रेस करके ना लेस देन प्रेस करना है। जो उधर लिखा हुआ ना 30 डिग्री 38 डिग्री एंगल के साथ लेफ्ट साइड पे लिखा ना लेस देन, तो आप शिफ्ट प्रेस लेस देन करेंगे तो ये उसमें कर्सर वहां चला जाएगा। 38 की बजाय आप 30 डिग्री लिखेंगे और एंटर कर देंगे, तो आपकी ये लाइन जो है वो 30 डिग्री की ड्रा हो गई। अगर चेक करना चाहें तो यहाँ से आप
एंगुलर जाके इस पे क्लिक करें और इस पे क्लिक करें, तो ये वाली लाइन जो है वो आपकी ये देखें 30 डिग्री की है, सही। तो ये 30 डिग्री एंगल की लाइन ड्रा हो गई। अब दूसरी लाइन हमने ड्रा करनी है एक 60 डिग्री की, तो तीसरा कॉर्नर खुद ही 90 डिग्री हो जाएगा। तो 60 डिग्री की ड्रा करनी है, तो वो कैसे करूँगा? उसका तरीका ये है कि मैं ये करूँ कि इधर से जो है इस पॉइंट से लूँ, लाइन की कमांड लूँ, इधर से पॉइंट लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल। इसमें देखें अगर मैं इधर एंगल लेता हूँ तो ये देखें वो 180 बता रहा है एंगल। ये मुझे इधर से इस लाइन से 60 डिग्री लेना है, ऐसे इसको इस तरफ, इधर से नहीं लेना। इधर से लूंगा तो ये देखें 90 डिग्री बता रहा है, इधर से 60 लूंगा तो फिर भी ये इसके दरमियान एंगल बनेगा। मुझे चाहिए नीचे से, यहाँ से, यहाँ 180 है और इधर से मैं इधर आना है, तो ये 60 डिग्री कब बनेगा? 180 में से इधर ये देखें 150 कम हो रहा है, 180 से कम, तो मैंने काम कितना करना है? 60 डिग्री। तो 120 डिग्री एंगल ड्रा करूंगा, यानी इधर से वो एक्चुअली इधर से वो 120 डिग्री होगा ऐसे। तो इसका मतलब 120 डिग्री ड्रा कर दूं, चूंकि ये रेफरेंस पॉइंट इधर से ले रहा है, तो 120 डिग्री ड्रा करता हूँ और लाइन में कोई भी ड्रा कर देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल 25 की ये लंबी लाइन ड्रा कर देता हूँ, शिफ्ट लेस देन करता हूँ और यहाँ 120 डिग्री एंगल ड्रा करता हूँ। तो ये दोनों होगी। अब दोनों को आपने ट्रिम कर दें, यहाँ से ये ट्रिम की कमांड लें, इसको लेफ्ट क्लिक करें, इसको लेफ्ट क्लिक करें, फिर राइट क्लिक करें और फिर इनको लेफ्ट क्लिक करके ऊपर वाली डिलीट कर दें, ठीक, और एस्केप प्रेस करें। अब देखें तो ये एंगल जो है आपका, ये वाला जो एंगल है वो आपका 60 डिग्री है। ये देखें ये 60 डिग्री है और ये मैंने पहले ही बता दिया आपको, ये देखें 30 डिग्री है और ये 90 होगा डेफिनेटली, 180 होता है सम। तो ये जो है वो आपका, ये देखें 90 डिग्री। तो इस तरीके से आप जो है वो ये 90, ये 60 है और ये 30, तो ये इस तरीके से आप जो है ना वो इसका एंगल जो है वो कर सकते हैं, ठीक। ये ड्रा कर दी इस तरह। ये दूसरा ग्रुप ये करेगा, तो ये आप खुद ड्रा करके एक टास्क दिखा देंगे। पहला ग्रुप, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। पांचवें के बाद फिर ये पहला ग्रुप, दूसरा, तीसरा, सॉरी 1 2 3 4 5, उसके बाद 6 7 8 ही है ना, हाँ 8 तक। तो इस तरह आप जो है ना वो ड्रा करके दे दें मुझे। तो बाकी ये राइट रोल नंबर, ये बेसिक शेप ये कैसे करना है, ये आप सेंटर लाइन ये मैंने बता दिया आपको। ये कैसे मेक सेंटर लाइन इन द सर्कल यू हैव मेड एंड चेंज द लाइन टाइप ऑफ स्क्वायर टू डैश। हाँ ये लाइन आपने उसकी जो है ना वो चेंज भी करनी है, ठीक है। तो स्क्वायर जो है सेंटर में, वो क्या कह रहा है कि आप ये करें सेंटर लाइंस इन द सर्कल। तो सर्कल में आपने सेंटर लाइंस ड्रा करनी है, ठीक है। तो सेंटर लाइन ड्रा कर दें, ठीक है। कैसे करेंगे? एक तो कोऑर्डिनेट ले लें, उससे कर दें। यहाँ सेंटर का मैंने लाइन बता दी है आपको, सेंटर लाइन मार्क सेंटर से, एनोटेट में जाएं, सेंटर मार्क करें। अब इस लाइन को अगर मैं चेंज करना चाहूँ तो ये हो जाएगी। सेंटर लाइन को डैश में करना है, क्या है डैश की तरफ, डैश ये सेंटर है, जिसको मैं डैश करता हूँ तो ये डैश हो गई है। ये देखिए इस वक्त डैश है, ये बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस की डैश है, ठीक है। और इसको मैं सेंटर करूंगा तो ये देखिए आप डिस्टेंस जो है ना वो इसका, ये देखें सेंटर वाली लाइन है, ठीक है। तो इस तरह आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई भी सेंटर की लाइन बना के कन्वर्ट कर सकते हैं। फिलहाल आप ये टास्क करें और ये वाले उसमें ड्राइंग में करते हैं। सेव योर ड्राइंग एज योर नेम, ये नेम से आप सेव कैसे करनी है वो भी पता है आप। अच्छा, बल्कि ये टास्क 2 भी है। टास्क 2 में इक्विलेटरल ट्राइंगल बनानी है। इक्विलेटर क्या होती है? ये होती है, ये देखें इक्विलेटरल ट्राइंगल जो है ना वो साइड सेम साइड्स होती हैं उसकी, ठीक है। तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल जो सेम साइड्स वाली होती है, यानी एंगल दरमियान में 60 होते हैं। तो ये भी बनानी है आपने, 60 डिग्री एंगल है और 4.5 उसकी लेंथ है। आल्सो ड्रा द 3 सर्कल्स ऑफ 1.6 मीटर ड्राया एट 3 कॉर्नर्स ऑफ द ट्राइंगल, ठीक है। तो 1.6 के सर्कल आप उनके हर कॉर्नर पे ड्रा करेंगे और उसके बाद हैच इज सर्कल एट द कॉर्नर ऑफ द ट्राइंगल विद द प्रॉपर्टी। ये एक बंदा ये टास्क करे, ठीक है। यानी आप समझे कि मैं इनको डिवाइड ऐसे करता हूँ कि ये जो है ना पहले 5 तो आपके ये हो गए ना,
A square with its 4 corners at the midpoints. Square with its 4 corners at the midpoints. नहीं बल्कि ये आसान है, ये बाकी आप खुद लैब में कर लीजिएगा और रिपोर्ट में कर लीजिएगा। इधर आप बस ये 2 करें, ट्राइंगल ड्रा कर दें और स्क्वायर ऑफ साइड्स, सर्कल भी ठीक है, बस ये 2 ट्राइंगल ड्रा कर दें और ये एक ट्राइंगल ड्रा कर दें, 3। तो 3 जो है ना, ये 3 बनते हैं हमारे टास्क, 30 60 90 वाला, एक 90 45 वाला और ये एक इक्विलेटर ट्राइंगल वाला, और इसके अंदर आखिर में सर्कल भी ड्रा करने हैं। ठीक, ये 3 करने हैं आपने। तो ये 3 के लिए आपके ग्रुप है 9, 3 है तो ग्रुप पहले 3 हाँ, पहले 3 जो है ना ये टास्क कर दें, C1 C2 C3 ये वाला कर दें, और C4 C5 C6 ये वाला कर दें, 90 45 वाला, और ये आखिरी 2 जो है वो ये वाला कर देना। ठीक है, इस तरह ये मुकम्मल हो जाएंगे टास्क। ये तो हो गया हमारा ऑटोकैड का। अब मैं थोड़ा सा आता हूँ उधर विजियो के ऊपर। ठीक है, तो विजियो का जल्दी करके मैं इसको खत्म करता हूँ। विजियो में देखें तो ये फ्रेगमेंटेशन हमने की थी। विजियो के टास्क हमारे ये हैं, ये लिखे हुए हैं सारे। इसके अंदर जो है वो फ्रेगमेंटेशन यूनियन पहले की थी, लेकिन आज फिर मैं इसको एक दफ़ा रिपीट कर दूंगा, फ्रेगमेंटेशन और यूनियन कैसे की थी। ठीक है, ये सिलेंडर बनाया था असल में हमने ये वाला। तो आप कोशिश किया करें इसके अंदर टास्क में सिलेंडर जैसा बनाया, तो आप कोई अपनी शेप जो है ना नई, वो भी इसमें ऐड करना शुरू करें। ठीक है, वो भी शुरू करें। विजियो लिखता हूँ मैं, विजियो लिख के फॉर एग्जांपल ये क्रिएट किया। इसके अंदर देखें ये सिलेंडर बनाना है। सिलेंडर कैसे बनाया था मैंने लास्ट टाइम, एलिप्स ली थी एक, ये एलिप्स ली फॉर एग्जांपल, इसको कंट्रोल C V का 3 दफ़ा कर दिया था, और इसके बाद ये नीचे ले गया, इसको मैं थोड़ा छोटा कर दिया था, स्मॉलर करके। इसको मैंने दोनों को सेलेक्ट किया, ऊपर वालों को इधर से अलाइन किया सेंटर और अलाइन मिडल, ये दरमियान में चलेंगी। इनको पकड़ के मैंने ड्रैग कर लिया, ऊपर ले गया, ये इधर थोड़ा सा नीचे ले गया, ये इन दोनों को सिलेक्ट किया और फिर अलाइन सेंटर कर दिया। ठीक है, तो ये आपस में वर्टिकली लाइन होगी। अब मैंने एक रेक्टेंगल लिया और इसके ऊपर ड्रा कर दिए, और इसकी लेंथ जो है मैंने उतनी रखी जितनी एलिप्स की है। ये इस तरह मैंने पकड़ के ये कर ली। ठीक है, जब ये होगी तो एस्केप प्रेस करें या इस पॉइंटर टूल को करें, उसके बाद इस रेक्टेंगल को क्लिक करें और सेंड बैक कर दें। सेंड बैक करने के बाद ये पीछे चली जाएगी बैक पे, और इस सबको सेलेक्ट करें और ऑपरेशंस में जाके फ्रेगमेंट का ऑप्शन क्लिक करें। तो फ्रेगमेंट के बाद ऊपर वाले सारे डिलीट कर दें ये ऑप्शन। तो ये सिलेंडर बन गया हमारा। अब इस सिलेंडर के अंदर ये फ्रेगमेंट यूज ये जो लाइन है ना, ये वाली, ये लाइन भी हमने डिलीट करनी है। ये करने के लिए यूनियन करें, ये ऊपर वाले को सिलेक्ट करें कंट्रोल प्रेस करके, और नीचे वाले को प्रेस करें। करने के बाद इधर से आप यूनियन कर दें, तो ये नीचे वाली लाइन 2 की खत्म होगी। यूनियन क्या होता है असल में, 2 लिया फॉर एग्जांपल ये लें, तो इसका यूनियन करेंगे तो यूनियन क्या होता है, दोनों का ये कर देता है, ये यूनियन हो गया। सही। और अगर आपने इंटरसेक्ट करना है, इंटरसेक्ट, तो इंटरसेक्ट ये होता है यानी उनका जो कॉमन पॉइंट है वो ले लेगा। ठीक है, इसी तरह बाकी भी ऑपरेशन है वो भी आप सब्ट्रैक्ट करना है, ये सब्ट्रैक्ट कर देगा। ठीक है, इस तरह आप जो है ना ये डिफरेंट ऑप्शन आप इसके यूज कर सकते हैं। इंटरसेक्ट कंबाइन करना है तो ये देखें कंबाइन कर दिया। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप ये देखें कंबाइन हो गया। तो बहरहाल ये इस तरह हो जाएगा। तो ये मैंने यूनियन किया ये वाला इधर, तो ये यूनियन। अब इस पे कलर फिल कर दें फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो ये मेरा सिलेंडर बन गया था, ये लास्ट टाइम हमने कर लिया था। सही, कंट्रोल A डिलीट। अब आगे चलते हैं। अब ये शेप बनानी है हमने ये वाली, और बेसिक ग्रुपिंग एंड लेयर्स, बेसिक ग्रुपिंग एंड लेयर्स ग्रुपिंग करनी है। अच्छा, ग्रुपिंग करने के लिए तो वही जो सिलेंडर बना था ना हमारा कंट्रोल Z, ये सिलेंडर देखें, इसको पकड़ के ऐसे करूंगा तो ये ऐसे चला जाएगा। तो मैं इस पूरे को सिलेक्ट करूं और ग्रुप कर इधर से अब ये ग्रुप बन गया इसको छोटा करूंगा, कंट्रोल C करूंगा, ये पूरा ग्रुप है। ठीक है, इस तरह आगे चलते हैं। अब मैंने ये शेप बनानी है। ठीक है, इसको मूव भी करना है सिलेंडर को, ये देखें इधर से आप ऐसे मूव भी कर सकते हैं, ये देखें। अच्छा, उसके बाद आगे चलते हैं। ये शेप बनानी है। अब ये शेप बनाने के लिए क्या करेंगे, इस तरह की शेप बनानी है, और शेप बना के हमने क्या करना है, इसको फाइनल में बता दूं ताकि आपको नजर आए क्या बनाना चाह रहे हैं हम। अच्छा, फिर उसके कनेक्टर्स और कनेक्शन पॉइंट भी बनाने हैं इसके। ये पहले शेप तो बनाए ना हम, ये वाली शेप कैसे बनेगी, इस शेप को मैं सामने रखता हूं ताकि आपको नजर आए। ये देखें, ये शेप पहले सर्कल बनाना है एक हमने, ये इस तरह की शेप्स हैं, ये देखिए
फिर इनके कनेक्टर बना के लाइन है। देखिए शेप पहले बनानी है हमने, तो ये शेप बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको मैं सीधा ही कर लूँ। तो सर्कल बनाया पहले मैंने, ये सर्कल बन गया, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, इसके अंदर रेक्टेंगल बनानी है, ये रेक्टेंगल है, तो एक रेक्टेंगल लेता हूँ और इसके ऊपर ड्रा करता हूँ ऐसे, और इस रेक्टेंगल को सेंटर में कर देता हूँ, ठीक है। सेंटर करने का एक और भी तरीका है वैसे, ये तो मैं इस तरह करूँ, एस्केप प्रेस करें, इस तरह नहीं होती सेंटर, अगर मैं इसको सेंटर करूँ, ये सेंटर और इसको मिडल भी कर दूँ, वेरी गुड, ये इस तरह भी हो जाएगी। ये पिछले उनमें उनको नहीं बताया मैंने, ये इस तरह भी हो सकती है। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है कि एक और हमने ये एक स्क्वायर लेना है, जो कि इसको थोड़ी शेप चेंज करनी है। एक स्क्वायर लेंगे अगेन, ये अब स्क्वायर की फॉर्म लेंगे, ये इसको हम थोड़ा रोटेट करेंगे ऐसे 90 डिग्री, और इसको पकड़ के इसके अंदर यहाँ कर देते हैं, थोड़ा छोटा कर देते हैं, ठीक है। इस तरह थोड़ा छोटा कर लेते हैं, अब ठीक है। अब इसको भी हमने सेंटर करना है, तो एस्केप प्रेस करें और इसको सारे को सिलेक्ट करें और सेंटर करें जरा, ये सेंटर हो गया, ठीक है। मिडल भी कर दें, मिडल भी हो गया, सही। अब ये हो गया। अब इसको आपने क्या करना है कि अब इसको हमने ये डिलीट करना है, ये लाइनें, ये देखें इस तरह की शेप बनाने के लिए हमें, अब इसके अंदर दो ऑप्शन है, दो काम कर सकते हैं, दोनों से मैं करके दिखाऊंगा आपको, आप भी कर लीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल दो टास्क करेंगे, यानी ट्रिम, फ्रेगमेंट और कलर कर दें, ट्रिम करें और फ्रेगमेंट करें, यूनियन और फ्रेगमेंट दोनों से कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं ट्रिम से करता हूँ, ट्रिम क्या है कि इसको और इसको सिलेक्ट करूँ, दोनों को कंट्रोल प्रेस करके, और यहाँ से ट्रिम का ऑप्शन क्लिक करूँ, किधर गया ट्रिम का, ऑपरेशन में होगा ट्रिम का, ट्रिम का हो गया। तो अब मैं इससे ये वाला सेलेक्ट डिलीट कर दूँ, ये भी डिलीट कर दूँ, ये भी डिलीट कर दूँ, ये भी डिलीट कर दूँ, ये ट्रिम होगी। उसके बाद पूरा सेलेक्ट करूँ, अब मैं बाहर वाली ये भी डिलीट करनी है ना, ये तो इस तरह सारी डिलीट हो रही है, तो मैं इसलिए इसको पूरा सेलेक्ट करूँ और फ्रेगमेंट भी कर दूँ। फ्रेगमेंट करूंगा तो अब ये जो है ना अलहदा से डिलीट कर दूंगा मैं, तो ये पूरी शेप बन गई, इसमें कलर कोई और फिल कर दे, इस तरह जो है हमारा ये शेप तैयार हो जाएगी, ठीक है। ये वही बन गई शेप उस तरह। अच्छा, ये ट्रिम से किया, अब यूनियन से करता हूँ, ठीक है। तो यूनियन से कैसे करेंगे, ये मेरी शेप बन गई, ठीक है। कंट्रोल सी कर लेता हूँ, अब कंट्रोल जी करके, अब ये शेप है। अब मैं इसको कंट्रोल वी से ये वाली इधर बन रही, इसको ग्रुप कर लेता हूँ, ये देखें ग्रुप करूंगा, ये शेप मेरी तैयार है। अब इसको मैं फ्रेगमेंट से यूनियन से करता हूँ। यूनियन क्या है, इसको और इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ और यूनियन करता हूँ, ये देखिए यूनियन हो गया। यूनियन के बाद मैं इसको फ्रेगमेंट करता हूँ, ये और ये डिलीट कर दी बस। तो इस तरह भी आप बना सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है वो डिफरेंट शेप बना। अब ये इसको ग्रुप कर लिया। अब इसके कनेक्टर बनाने हैं, कनेक्टर, ये कनेक्शन पॉइंट बताया हुआ था ना यहाँ, कनेक्शन, ये जो कनेक्शन और कनेक्टर पॉइंट है, कनेक्टर्स एंड कनेक्शन पॉइंट, कनेक्टर्स बनाने हैं, यानी इसको मैंने कनेक्ट करना है, असल में ये चाह रहा हूँ कनेक्ट करना, ये देखिए इस तरह कनेक्ट करना है मैंने, ये शेप है ना, इस तरह लाइनें कनेक्ट करनी है। फिर उनको लाइन राउंडिंग, वेटिंग और फॉर्मेटिंग भी करनी है लाइंस की, ये लाइंस की वो भी मैं करके दिखा देता हूँ आपको, ये सारा कुछ इकट्ठा ही। तो ये देखिए ये है। अब इसमें करना है कनेक्शन पॉइंट, यहाँ से लेंगे, यहाँ ये कनेक्टर है, कनेक्टर से लाइनें लगाएंगे, लेकिन फिलहाल उससे पहले कनेक्शन पॉइंट लेंगे। कनेक्शन पॉइंट क्लिक करें, क्लिक करके इसको जूम करें, कंट्रोल प्रेस करें, और कंट्रोल प्रेस करके जहां से आपने कनेक्टर लगाना है उस पर क्लिक करें। ये देखें ये एक पॉइंट लग गया, कंट्रोल प्रेस ही रखा हुआ है, जस्ट होल्ड control button on the keyboard and just left click here. This is again connection point. So as many connection points you want to highlight or you want to specify on this shape, you can click, hold control button and then mouse left click like this. So 4 points I have specified. Now escape is okay, control and wheel just to change you can see these are the 4 points which highlighted, these are the connection points. Now I will click, for example, escape or pointer tool, and I can change the shape of this. Control C V, for example, like this. Different shapes I want to like this, okay. And this shape, for example, also I want to
make the connection points. So for example, these connection points, yeah, here, this one, this one, this one, and this one. Control wheel and yeah, like escape, and then shape maybe like this one, and then again Control C or V, Control C or V, Control V, select. So in this way, I have drawn these shapes. Now I will select all these shapes and I will press, no, not center, middle. So it will be middle, horizontal, vertically, you can say aligned, horizontally aligned, sorry, and then position horizontally, because you can see here the distance between these two is less, the distance between these two are is more, so select all and then distribute horizontally. So this is the shapes you will see. And now similarly repeat the same process, align middle, horizontally distribute horizontally. So in this way, now use the connector, this connector, Control 3 or connector, and you will click from here. For example, you want to click this one and this to this one, and for example, this to this one. So you can escape and you can select, and this just like this one. This you can move like this. Also connector, for example, from here to here. Escape and just click, select, and then like this. Similarly, for example, connection point from here to here, here to this one, here to here, here to here, here to here, here to here, like that. So you can change, okay? ठीक है, ये आ गया. For example, this one. इसको select करिए, थोड़ा position कर ले, reposition, you can reposition it. This one, you want to reposition like this one, is okay, no problem. Like this. Now, now you will click corner rounding. No, this is done. Now you want to this line rounding, weighting, and formatting. This you want to do. So how you will do? Just click this line, and or no need to click escape or corner rounding. This is the corner rounding option. If you don't find these corner rounding operation, just right click, customize quick access bar, popular command, all commands. You will see all commands. And here's operation mean this is actually geometric operation, this operation, okay? So from G, you can see here, G, geometric operation. Yes, this just add here and then okay, it will appear here. And similarly, corner rounding, maybe from C, corner rounding, this one corner rounding. Just click it here and add it here and click, it will be appear. For example, add and okay. So you will see it is appearing here. This is corner rounding. It is not appearing. If I will again remove, for example, corner rounding, I will remove. Okay. So you will see here, no corner rounding is not available. In this way, you can corner rounding. When you will click corner rounding, this window will appear. You select the line, and here you can change the weight. For example, I will write the 5. So weight of the line, for example, 5, 10. So similarly, you can change the weight. No rounding. This you can see. Now it is rounded. Shape you can 5 is okay. And color may be red. And arrow, if you want to show the arrow, is okay. And the end arrow also, if you want to show, this is the end arrow. Similarly, large or extra large or something. End arrow you want to jumbo like that. So this is the end arrow. Now this is done. Now you will click it here, and here you format painter. Just click format painter one time, and just you will see the other line will be drawn. The format of the other line will be same. So you can rearrange, reposition like this. If you want to format all the lines with the same format, just click it here and double click format painter.
double click and then just click here, 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 here. So you can like this. Okay. So in this way you can see you have drawn this shape. Now you can change the color and also, for example, this one, and you can change the width of this, for example, this one. So in this way you can change color and everything. Okay. So this done. Now creating and saving stencils. No, because you have आप समझ रहे हैं कि ये देखिए सारा इतनी मेहनत से बनाया, तो why not to save it? तो आप नेक्स्ट टाइम जब विजियो खोले तो आपको ये नजर आए. ये देखिए मैंने लास्ट टाइम भी शेप बनाई थी एक, फॉर एग्जांपल मैं इसमें न्यू ओपन करूं अगर, तो पुरानी मेरी गायब हो जाएगी. पुरानी किधर गई है? हाँ, तो ये पुरानी है, वो क्रॉस की है. तो अगर मैं न्यू लिखूं, यहाँ से ओपन करूं, तो न्यू में जाके मैं ओपन करता हूँ स्टेंसिल्स. एक मिनट, स्टेंसिल्स यहाँ देखिए मोर ऑप्शंस में ये स्टेंसिल्स है. तो ये मैंने स्टेंसिल्स कल बनाई थी, ओपन स्टेंसिल्स करता हूँ और यहाँ जाके आई विल ओपन माय लास्ट टाइम सेव्ड स्टेंसिल्स lab3. These are the two stencils. One, this one, you can see this one stencils I can like, and this stencil last time I have saved. Okay. And I will open again, for example, quick open stencils and 10. So 10 you can say I saved this one, this one, this I made last time. Okay, this is made last time, this stencil like this. Okay, so these are the last time made stencil cross, don't save. Now this is our today's drawing. So for example, control C and V, this I want to save, and control Z, control C and V, and this shape, this shape, this shape, this shape, this shape I want to save, so that next time I will directly use it. And also this I will group it so that this show the one only one shape. And control CV, if I will click, I can draw as many shapes as possible. Okay, like this. Now I want to save this. So go to more shapes and new stencil. US units or metric, whatever you have made. Maybe in the start you made with the US units, because now you can say by default is US units. So US units, for example, and you will just, this is the stencils name. Okay, stencil 14 by default. Now you will drag this one here. For example, this drag here, then this drag here, drag it here, and drag it here. Now all these shapes are, you have, for example, you can say this is one, shape one, this is shape two, shape 3, and shape 4, and shape 5. Okay, now I want to save. So I will save it here, for example, ed lab3, and I will say stencil 14, and I will write it ed3, our third session, and C third session, and C mean third group, and section is C. So I will save it here, because error, because why error? Okay, no spacing, I think so. First try closing or reopening the file, try next restarting it. Okay, it's saved, already saved. Okay, so now I will, for example, open it here, open stencil. No, it's not saved. Huh? It's not saved, I think so. Lab3, drawing 3. So this is not saved. Okay, stencil 14. Okay, I will delete this. Stencil 14 is okay. Save. First try closing and reopening the file.
Okay, maybe I will this one, this one, this one. Control C and Control V. Okay, and then from here Control C. Okay, now these are the shapes. I will save this file. Lab3, drawing 16, drawing 4. Okay, it's showing some error. Maybe I have to restart it. That's the reason. But when I will restart, all will disappear. Okay, but the method I have shown you that how to. These are the saved, and then save and stencils, for example, 2, 3, stencil 3, for example. So it's not saving. Okay, otherwise this error not appearing last time. So you can okay, and then and you will save. So it will. Stencil 3. Try closing. Yes, now it's okay. I will Visio. Open the Visio. US units. Stencils. Open stencils. Lab3. No, that's not saved. Okay, so you will repeat the process, same process again. So these you see here, these are saved. Last time I have saved, but this time not saved. Again, you can try and save. So this was the end of session. I think so. It's okay. Now you will draw this shape. Okay, similarly this shape you will draw, and then you will connect these lines and you will draw this type of shape and show me. Okay, and this not okay. You will just realign. Okay, like this, and this is okay. And these are okay, I think so. Like this, you can manage it like that. Okay. Then, for example, you can again group it, group already group, and then you will again group, and you will save it again. Read only. Would you like to edit this? Yes. So this shape 4, for example, shape 4. Okay, and save. Today it is encountering problem. I have to restart my laptop. Maybe there's the problem. So okay, so this is the end of session. Don't save. This is the end of session. Now you will draw AutoCAD task, and this task is Visio task is same for all groups, and you will show me. अगर आप मुझे बताएं अब आप शो कर लेंगे इसको ड्रा करके अभी मुझे दे दें ग्रुप व्हाट्सएप पे शेयर कर दें 10 मिनट ले लें जैसे भी ये दोनों जब ड्रा हो जाए तो व्हाट्सएप पे शेयर कर दें एक ड्रा होता है तो वो करें तो मैं इसके नंबर इधर आपके एक्सेल शीट में अभी इधर के इसके लैब 3 टास्क का इधर लिख लेते हैं उसके मैं लगा दूंगा ठीक है आप ये ड्रा करना शुरू करें और ये मुझे दिखा दें बस कंट्रोल सी करते हैं कंट्रोल भी कर देते हैं ठीक यहाँ से इसमें मैं आपके नंबर ये 31 के लगा देता हूँ 31 जो है वो आपका है ये आप बस ड्रा करें इसको मैं जरा खत्म कर दूँ